Hello. Welcome back to the big weekend preview stream. Yes, it's Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ, for people who missed out, कल भी हमने किया था, बहुत ही अच्छा preview हुआ था for the Manchester derby जो होने वाला है Sunday को. But before that, we are going to be discussing lots more because by Potter ball, especially Chelsea fans. Let's get in more Chelsea fans. Pretty sure we can get in more Chelsea fans. यार सब लोग जो भी आए, first of all, thanks for coming on. लेकिन हाँ, not just Chelsea, of course, the North London derby is there. और of course, for those who follow other leagues, वहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस है, स्पेशली इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो होता है ना, और जो मिड वीक में यूरोपियन मैचेस है, इसके लिए आई बिलीव देयर आर लॉट टू बी डिस्कस्ड. और यस, वी आर हैविंग अ कपल ऑफ गेस्ट, तो उनके लिए भी रुकेगा डेफिनेटली. वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ प्रॉपर नॉर्थ लंडन derby even in the stream. So we are going to have obviously Utkarsh and Eugin as well, जो एक Spurs fan है, Utkarsh एक Arsenal fan है, so they'll be joining in midway through as soon as possible. लेकिन सब लोग सबसे पहले बिग अप हो जाओ और सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए. एवरीवन, हसीब इन द हाउस, थैंक्स बढ़िया हो आप, अच्छा हो, आई होप सो. रैशफोर्ड से बेटर प्लेयर्स थे, मित्रोविच एंड फ्यू अदर्स. हाँ, द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ. लेकिन आई थिंक उन्होंने देखा है बेसिकली द इंप्रूवमेंट दैट रैशफोर्ड हैज शोन. I don't know, maybe the fact that he got assists as well to Anthony against Arsenal, बड़ा वाला मैच था. I'm guessing that football freaks. आप बोलिए बाकी लोग भाई. और by the way, yes, Eric Ten Hag also winning the manager of the month यार. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए it's a bonanza. क्या ही तो बोलेंगे, मतलब यूजुअली होता नहीं है, you know, सेम क्लब से बेसिकली दोनों ही जीत गए, लेकिन actually happened. क्या बोल सकते हो उसके लिए. Okay, potheads. Well, by the way, talking about that, there is something, and yes, the big news. भाई सब लोग ने hopefully मेरा शॉर्ट्स देख लिया हो. I did release the shorts earlier in the day, and that is big news. Yes, एक तो यार क्यों लीक हो रही है when it comes to transfers. Nkunku, or yes, like Darren is saying, भाई show me your evil smile for Nkunku. Again, Darren, हुआ नहीं अभी तक. It is not over the line yet. So we don't want to do a Rafinha जो पहले हुआ था, लेकिन a lot many others as well. तो भाई let's see, hopefully यार, लेकिन मेडिकल करना एक बड़ा बात है. And of course, you know, there's something in there. बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कंफर्म किया after my shots as well, just saying, and it's pretty sure, you know, it was done in terms of the medical, लेकिन it was more in terms of future का transfer. So looks like they'll be agreeing on some fee. Hopefully yes. अभी भी ऑफिशियल नहीं, इसलिए मैं 100% नहीं बोल रहा, लेकिन looks like almighty everyone. Good evening to Lone Wolf. बिल्कुल. Hello, Anshul as well. Nice to see you. Ayush as well. भाई बिल्कुल. Red Devil, Lone Wolf. Yeah. By the way, we'll be discussing that briefly क्योंकि कल डिटेल में हमने किया था, लेकिन वो भी कवर करेंगे absolutely. अरे बिल्कुल out of nowhere ही था, मतलब it was linked जब especially Tuchel थे ना, because हाँ, Tuchel strangely he was actually not part of Chelsea. Not part of PSG when Tuchel was there. मतलब initially was, फिर वो निकल गए थे, right? लेकिन recent times में Tuchel बहुत linked हुए थे, तो it's kind of strange. Again, is Potter wanting that? Potter के पास already इतने सारे players आ गए. But by the way, मैं वेट कर रहा था भाई पॉटर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और भाई क्या है, चेल्सी का यूट्यूब एक प्ले मेरे से, यू नो, दे डिड नॉट टेलीकास्ट इट लाइव एंड देन बाद में डाला उन्होंने, लेकिन कोई नहीं, मैं देख चुका हूं, तो देयर इज सम न्यूज़ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग. सो फर्स्ट पीपल, लेट्स स्टार्ट. ओके, गुड इवनिंग टू नेथन एज वेल. बाय द वे, सबसे पहले चेल्सी का मैच हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन like I said, North London derby and lot of other games, not just in Premier League, भी बाकी भी लीग्स में करने वाले. तो सब लोग सबसे पहले मैं लाइक बटन दबा दीजिए. अगेन आई एम सीइंग लाइक्स वेरी लो, उससे ही बेसिकली गाड़ी आगे चलती है. सो लेट्स हैव मोर लाइक्स, हैव मोर पीपल. एंड यस, prediction league for members especially is on very much for prize as well. तो भाई membership is open for people who are wondering. तो भाई let's go on, let's have many people in so that हम अच्छा डिस्कशन करें. तो भाई सबसे पहले हाँ, तो टीम न्यूज. Of course, Chelsea is going away to Palace, और सब लोग बोल रहे हैं मैनचेस्टर डार्बी है, नॉर्थ लंडन डार्बी है. भाई दिस इज आल्सो डार्बी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई चेल्सी ने हगा है इन टर्म्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सीजन. हम सब जानते हैं. हाँ, आई हैव टू शो द प्रीमियर लीग टेबल इवन इफ आई डोंट लाइक इट और नॉट, लेकिन द फैक्ट इज दैट पैलेस, आई बिलीव पैलेस का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है व्हेन इट कम्स टू अगेंस्ट पॉटर स्पेसिफिकली. सो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, लाइक यू नो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इट्स नॉट जस्ट पॉटर, वियरा, पैलेस बीइंग, मतलब अवे गेम है बाय द वे सेलर्स पार्क में. आई थिंक इट इज क्रेजी. मतलब आर्गुएबली आप लोग बोलिए, जस्ट एज अ व्यूअर,
What do you all think? Which is the best atmosphere when it comes to just atmosphere alone? एक प्रीमियरशिप ग्राउंड जो आप लोग बोलिए इन द कमेंट्स, आप लोग के लिए कौन सा ग्राउंड है जहां पर बेस्ट एटमोस्फियर होता है? मेरे लिए सेलहर्स्ट पार्क इज राइट अप देयर, और दैट इज क्रिस्टल पैलेस का घर। और ऑफ कोर्स इट्स अ लंदन क्लब, लेकिन इट्स आल्सो आई थिंक टेक्निकली रूबन लॉफ्टस चीक डार्बी एज वेल एज कॉर्नर गैलेगर डार्बी। बट आप लोग बोलो, बिकॉज दे हैव स्पेंट सफिशिएंट टाइम दोनों ही प्लेयर्स एट पैलेस, इज इट इंपरेटिव कि भाई एक जन एटलीस्ट जो स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? लेट मी नो योर स्टार्टिंग लाइनअप। लेकिन टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग लाइनअप्स, क्विकली मैं ये बताना चाहूंगा, यस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख कर आ रहा हूं, एंड आई बिलीव सो फॉर चेल्सी एंड इवन फॉर एफपीएल मैनेजर्स आउट देयर, फर्स्टली पूछा गया था दैट व्हाट अबाउट एंगोलो कांटे एंड मेंडी। ठीक है, तो क्लियरली मेंडी के लिए बारे में बोले नहीं है फ्रॉम व्हाट आई कुड सेंस। अगेन आप लोग अगर सुने तो वो बता दीजिए, जहां तक मुझे आइडिया है। लेकिन his first reaction was no, they're not quite ready. तो looks like मेंडी भी जो हमने सुना था इवन इन ड्यूरिंग इंटरनेशनल ब्रेक, he might not be 100% fit. तो is that एक excuse to play Kepa again? Yes, by the way, प्रीमियर लीग में पहला गेम है फॉर पॉटर, वी कैन रीड वॉट एवर वी वांट टू, जो हमने देखा था अगेंस्ट सॉल्जबर्ग, राइट? लेकिन प्रीमियर लीग में पहला गेम है, दैट टू अवे। तो वुड यू जस्ट कंटिन्यू विद व्हाट यू हैव बीन प्लेइंग इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स? तो लुक्स लाइक मेरे लिए केपा माइट जस्ट स्टार्ट, हाँ, डिस्पाइट जो शॉट्स लेते हैं भाई पैलेस के प्लेयर्स। हैविंग सेड दैट, व्हाट अबाउट एंगोलो कांटे? एंगोलो कांटे अनफॉर्चुनेटली हमने सब देखा था, ही वाज ट्रेनिंग बट नॉट फिट इनफ। अगेन मैच फिटनेस नहीं है, तो एंगोलो कांटे विल नॉट बी देयर। लेकिन वेरी वेरी आई थिंक सरप्राइजिंग न्यूज इज दैट वी माइट आल्सो हैव कुकुरेया आउट। हाँ, पॉटर के चाहिए खिलाड़ी भाई वो नहीं आया है, तो लुक्स लाइक कुकुरेया माइट नॉट बी देयर बिकॉज ही हैज सम इलनेस। कहाँ कार्नी चुकुमे का कभी कुछ इलनेस है, बट कम ऑन, वो ऐसे भी शुरू नहीं करते, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो लुक्स लाइक कुकुरेया नॉट बीइंग देयर, शुड वी गो विद बेसिकली अ बैक फोर? अगर हम खेलते हैं बेन चिलवेल के साथ? अगेन जो रिपोर्ट्स आई थी इन द इंटरनेशनल ब्रेक, there were people who are saying that okay, we played that game against Brighton, और जो था एक behind the doors close friendly ना, उसमें apparently हमने four at the back खेला था with Ruben Loftus-Cheek at right back, and I don't know, maybe Chilwell plays at left back as in a back four, because again last game against Salzburg you didn't see Fofana, you didn't see basically Koulibaly starting as well. Or would you go nahi yaar, we need them back, we need proper center half. पैलेस के साथ में यू कैन नॉट रियली स्टार्ट विद एस्पिलिक्वेटा। लेट मी नो इन द चैट, मैं हम साथ साथ में बनाएंगे यार टीम, सब लोग कमन हो जाए। चलो लेट्स सी भाई, आई एम स्कैर्ड फॉर इंकुंकू बिकॉज ऑफ हैवर्ट्स, टीमो एंड पुलिसिक। यार डोंट बी स्कैर्ड डेरेन, मतलब अगेन कहीं ना कहीं तो हमें करना है ना साइनिंग्स, यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन रिमेंबर आई वुड डायरेक्टली कंपेयर टू टीमो, नॉट रियली हैवर्ट्स एंड पुलिसिक, बिकॉज देखिए टीमो वर्नर was what, एक striker. Yes, he was not like an out and out center forward as well, लेकिन he was a striker, or he was brought to kind of score goals. Nkunku, yes, a lot of goals जो मैंने शॉर्ट्स में भी बोला है, लेकिन in my opinion Nkunku can do much more, वो ज्यादा versatile है। even that Timo Werner, सच में बोल रहा हूँ, he can play anywhere in the forward four positions, और इसलिए मैं उनको टोटली जज नहीं करूंगा उस पर। लेकिन एट द सेम टाइम भाई हालैंड रिसेंटली आए, सबने देखा हालैंड ने क्या किया, तो व्हाई नॉट, इट इज पॉसिबल स्टिल, और अभी भी यंग है। यस, इज कमिंग लिटरली एट द सेम एज जो टीमो वर्नर आए थे 24, बट लेट्स सी, इट्स टू अर्ली, लेट्स रिएक्ट मोर व्हेन ये हो जाए 100%। लेकिन अगेन भाई कोई गुंडोगन के बारे में बोलता नहीं, वही आल्सो केम फ्रॉम बुंडेसलीगा। देयर आर आल्सो रूमर्स ऑफ गोरेट्स्का स्वैप फॉर हैवर्ड, जस्ट हेड्स अप। हां, बायर्न का भी चल रहे थे, बट दोस आर लाइक मोर लाइक टिपिकल रूमर्स। यहां पर बाइल्ड news has been confirmed by tier 1 journalists that nahi, medical actually is is done, and it's a matter of them. I know it's kind of strange doing medical so much in advance, lekin at the same time you have a lot of discussions going on jo bahut log ne back kiya hai. Yeah, he's ill actually, Darren. अरे क्या हाल है भाई शायद, हम बात करेंगे absolutely even of Liverpool as well, and of course people, let's like and subscribe, let's have in more people यार, कहाँ गए सब लोग, come on, let's have in more people, और सब लोग like दबा दीजिए। I think I'm seeing the likes are less. Again we are being joined by Sunday League pundits as well as basically Eugin जो है एक Tottenham, a seasoned Tottenham fan, एक Tottenham ultra, so they'll be joining in as soon as possible। लेकिन हम पहले तो हम चेल्सी की बात करें, तो I'm discussing with you guys. And yes, of course, I'll be covering FPL as and when we are talking about the teams, etc. साथ में करेंगे। And कल का actually मैंने वही मेंबर से पूछना, I'll be
mainly I'm be focusing on a member stream. This is something that is pending, members only. और आप लोग चाहते हो तो भाई we'll do an FPL and then member stream we can do somewhere else. तो we'll definitely do, we'll sort it out. मैं अपने community page में डालूंगा एक poll और एक message. October month fixtures will decide the main title contenders. Exactly, especially जो already national teams are asking for teams to kind of rest players 1 week before the World Cup. So it's even more important that October में सब खिला दो सब best teams or get the maximum points. But it's after the international break, ये वाला weekend, and that is why it's interesting to know the team news, etc. Okay, bye everyone. Let me know if people are not getting notifications, bro. Pretty sure we can have more people in. I'm just wondering notifications नहीं आ रहे. Again, if you can share it, by brilliant. I have put it on Twitter, I put it in my community post, I put it in my Instagram post. Everyone, please consider liking that and sharing that. It just takes us a second. Or बहुत thanks for everyone who's here. Again, a lot to be discussed as always. So let me know, of course, with some transfer news as well. By Crystal Palace is a dangerous team. मतलब Crystal Palace is dangerous. लेकिन देखिए इन टर्म्स ऑफ द रिकॉर्ड स्ट्रेंजली क्रिस्टल पैलेस का रिकॉर्ड बुरा है भाई चेल्सी के साथ. हाँ, आई सेड कि उनका रिकॉर्ड है अच्छा व्हेन कम्स टू ग्रैम पॉटर. एंड अगेन भाई हम लोग सब ग्रैम पॉटर को पुत्र जी बुलाएंगे. क्या बोलते हो? पुत्र जी अच्छा नाम है. अपने पुत्र जी बुलाएंगे. एंड ग्रैम पॉटर के साथ अच्छा है पुत्र जी के साथ व्हेन इट कम्स टू देयर रिकॉर्ड. लेकिन चेल्सी दे हैव हैड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट 5 लीग फिक्सचर्स में दे हैव नॉट हैड इवन अ ड्रॉ. तो दैट इज समथिंग टू गो बाय. तो भाई मैं बोलता हूँ क्रिस्टल पैलेस आर अंडर प्रेशर. लेकिन अगेन मैं आई नो आई हैव बीन अवॉइडिंग शोइंग द टेबल, लेकिन वो मैं ज्यादा अवॉइड कर नहीं पाऊंगा. तो भाई टेबल तो दिखाना ही पड़ेगा एक बार, क्योंकि यार दैट इज समथिंग दैट इज not good as a Chelsea fan, I can say clearly, especially looking at Arsenal on top of the table. Of course we are having Arsenal fans as well joining us quickly. लेकिन मैं यहाँ पे दिखाने वाला table with that, I don't know man. मतलब it's almost desperate. Yes, 7th but only भाई 6 मैचेस हुए चेल्सी के. आई नो गेम वीक 9 है, बट रिमेंबर भाई चेल्सी का कैंसिल हुआ था मैच अगेंस्ट लिवरपूल, सो दैट इज स्टिल पेंडिंग. लेकिन और अगेन एक गेम वीक पूरा मिस हुआ था फॉर आई थिंक 9 out of 10 टीम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो क्लियरली यहां पर ज्यादा जज नहीं कर सकते. बट यू हैव टू से दैट चेल्सी विद रिस्पेक्ट टू द एक प्रॉपर एक ऑपोजिशन है इन द प्रीमियर लीग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल as well as Tottenham. मैं बोलता हूँ fighting for the top 4 and top 2 positions as well. मैं तो बोलता हूँ there we are lacking. तो both Chelsea and Liverpool in fact are lacking, or we have to kind of climb the table. और एक विक्ट्री एक लॉस कैन रियली गेट अस डाउन और अप, और वो है अभी करंटली. क्रिस्टल पैलेस भी टेक्निकली दे आर नॉट डूइंग ग्रेट, ठीक है, 6 पॉइंट्स पर है. लेकिन एट द सेम टाइम would you say that Crystal Palace एक अच्छी टीम लगी है? They have been unfortunate with injuries. Is it fair to say that? हाँ, उनका फॉर्म देखिए, मतलब they are coming with draw as well. लेकिन again Chelsea भाई आई वुड टेक दैट वेस्ट हैम विक्ट्री जैसे हमने लिया है एनी डे. आई होप दैट समथिंग दैट टू गो विद. बट अगेन लीग में हमने काफी दिनों से खेला नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट माइट बी अ डिफरेंस एज वेल. अरे हेलो तो तन्मय कैसे हो भाई? ग्रेट टू सी. एंड मेंडी इज फिट, डेरिन इज कंफर्मिंग. ओके ग्रेट. पैलेस काउंटर पे लीथल है. यस एब्सोल्युटली, दैट इज द पॉइंट. द मेन पैलेस इज मेन पैलेस बोलो, द मेन पॉइंट इज अबाउट एक काउंटर में ट्रांजिशन में व्हेन वी वर गेटिंग बीटन टाइम एंड अगेन अंडर थॉमस टुकल, हम कैसे बीट करेंगे एवरीवन, बिकॉज एंगोलो कांटे अगेन इज नॉट 100% फिट. जॉर्जिनियो आई मस्ट से कि यार इंटरनेशनल ब्रेक में जॉर्जिनियो ने अच्छा परफॉर्म किया है. लेकिन आई थिंक अगेन मेरा जहां तक समझ है, आई बिलीव अगेन ही माइट यूज अ मिडफील्ड 5 जो हम देखे थे सॉल्सबर्ग के साथ. तो वहां पर ही माइट स्टार्ट विद जॉर्जिनियो, विद कोवाचिच वन साइड, विद माउंट द अदर साइड, and go that way with of course our wing backs. One side Sterling अटैक करेंगे और एक साइड बेसिकली आपके you'll have James. That might be the thing. लेकिन अगर चिलवेल खेलेगा तो आई डोंट सी चिलवेल फिटिंग इन लाइक अ कुकुरे एट लेफ्ट सेंटर बैक. तो वहां पर मे बी स्टर्लिंग माइट बी रिजॉर्टेड टू अ फॉरवर्ड, क्योंकि हैवर्ट्स आ रहे हैं आफ्टर प्लेइंग गेम्स इन द इंटरनेशनल ब्रेक. हाँ, उन्होंने गोल किया है फाइनली, वो भी 2 गोल्स एक गेम में, होता नहीं है हैवर्ट्स को. तो पीपल लेट मी नो व्हाट इज योर स्टार्टिंग लाइनअप फॉर चेल्सी, और यहाँ पर हम भी साथ साथ में बना लेंगे. बिल्कुल यार शायद करेंगे. मतलब अगेन आई डोंट वांट टू jump between the games while I'm having one conversation. I hope we understand that, but absolutely करेंगे यार. डिस्क्रिप्शन देखिए, हम हर वीक करते हैं whenever we do preview. So हर एक game we will be covering, be it the predictions, be it basically the discussions. CFC Blues in the house. Hello, Chalobah is number 6. Yeah, this is one more news by Tanmay.
ये भी आ रहा है कि चालोबा माइट बी एक्चुअली ट्राइड, लेकिन एज अ स्टार्टर टर्न में आई डोंट थिंक सो। जकारिया मीनवाइल वो इतने अच्छे नहीं लगे थे इन इंटरनेशनल ब्रेक, आई मस्ट से, और लग रहा था भाई ही इज लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस, मैच फिटनेस, जो ही इज नॉट प्लेड मच इन यूवेंटस स्टार्टिंग 11 एज वेल एज चेल्सी, तो खेला ही नहीं अभी तक। तो आई थिंक वहां पर ऑल्सो आई डोंट सी देम कमिंग इन फॉर दैट रीजन, इसलिए मैं देखता हूँ जॉर्जिनो स्टार्टिंग इन दिस ओनली ना। यहाँ पर स्टार कर रहा हूँ, कम बैक टू द लिवरपूल गेम इन जस्ट अ फ्यू मिनट। भैया टुमारो वास्पी स्टार्स एंड लीविंग फुटबॉल, नहीं भाई कम ऑन इतने भी बुरे नहीं, हमारे लेजेंड है, हमारे कैप्टन है, लेकिन हाँ आई हियर यू व्हाट इज सेइंग। Highline Bundesliga, let's see again, हाँ there's a different way that they play again Leipzig, इतना पोजीशन नहीं होता लाइप्सिग का वर्सेस मे बी अदर टीम, सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर सीएफसी ब्लूज व्हाट इज सेइंग, लेकिन अगेन pretty sure that Werner was also the same, लेकिन I think he is much more versatile in terms of basically the positions he can play, और मुझे लगता है again someone who has a better assist record as well, और वो मुझे बोलता है he has a better footballing mind than Werner, no disrespect to Werner, लेकिन pretty much is by 60 million Nkunku is a bargain, better than spending 60 million on Gordon 100%. Nkunku is definitely top level. आप देखते हो जो people who follow me on Almighty Sports Plus with FIFA, Rafael Leao और Nkunku, whom will you prefer at CFC? Well, अगर एक प्लेयर आप बोलोगे ना, जस्ट गो विद वन प्लेयर, आई विल गो विद राफेल लियाओ, लेकिन द रीजन बीइंग दैट मे बी फॉर चेल्सी एनकुंकू इज बेटर, क्योंकि एनकुंकू खेलते हैं इन दैट कैंप पोजीशन, सेंट्रल यू नो से पोजीशन, मोर लाइक अ सेकंड स्ट्राइकर, और ही कैन आल्सो प्ले ऑन द विंग्स, वेयर इज राफेल लियाओ ही कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर, लेकिन मेनली उसका जो मेन पोजीशन है वो इज कमिंग ऑफ द लेफ्ट, और कमिंग ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड स्टर्लिंग का भी मेन पोजीशन है, और इसलिए मैं देखता हूँ भाई, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं देखता हूँ इंकुंकू माइट बी द बेटर फिट इन टर्म्स ऑफ द टीम स्क्वाड, लेकिन राफेल लियाओ ओवरऑल आई स्टिल बिलीव इज अ स्लाइटली बेटर प्लेयर, अगर मैं चाहूँ तो। योर थॉट्स ऑन टॉट बॉली ट्राइंग टू, और बाय द वे राफेल लियाओ नो करीबन 150 मिलियन बैंक यार, इंकुंकू आ रहे हैं उससे बेसिकली व्हाट ऑलमोस्ट हाफ और लेस देन दैट, राइट? टॉट बॉली ट्राइंग टू बाय लियोन, नहीं लियोन का मना कर दिया गया है देन, मतलब आगे ट्राई करना तो बनता है यार, मैं भी ट्राई करता हूँ कि यार रोज सचिन तेंदुलकर से बात हो जाए, लेकिन होता नहीं भाई, लियोन इज ह्यूज क्लब, आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग, और सैंटोस आई नो रिपोर्ट्स आए थे, कम ऑन द गाइस, मतलब अगेन यू कैन सी नहीं फीफा मैनेजर और व्हाटएवर जो नेविल बोल रहे थे, बट वो ट्राई कर रहे to get the best possible club. Again, there's a 4th division club in the Portuguese league as well as the Brazilian league जो बात चल रही है, I think it's still early days, लेकिन it'll be great to have that, क्योंकि हमें एक assurance रहेगा that okay we can have basically some backup you know say game time for people who are not doing well here, or some backup players अगर हमें चाहिए on emergency in the last days of transfer window. So there are a lot of things वहां पर development होगा players का, तो it's great in my knowledge. Reece James start or not? Reece James तो भाई 100% start करेगा वाजा. Thanks for coming on वाजा. I'm seeing you for the first time. So I hope you have subscribed to both our channels. It's Almighty Sports Plus and Almighty Blues FC. And yes, it's a fan channel for all three. We'll be discussing all the games as much as possible. तो बने रहना सब लोग last तक. Of course, we are having guests as well. Join us in just a few minutes. Big up to Mudit by 1 Hour Buzz as well. Mayuk in the house as well. Again. Big up to apne almighty goat bro, NS Sports TV in the house, great to see you bro, always, and Manchester United will win the Manchester Derby and hand Manchester City the first loss of the season. Okay, interesting. Again, NS Sports TV and everyone, Manchester Derby हमने detail में कल कर लिया है, but we will be discussing quickly as soon as we have the guest. लेकिन coming back to Chelsea's formation, भाई हो जाए, let's create it. What do you think? It's time to create it. हाँ, by the way, opposition की हम बात कर रहे थे quickly. तो क्रिस्टल पैलेस का जाहा माइट प्ले, तो इफ यू हैव एन एजे जाहा, मटेटा बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मटेटा, ये ऑटसन एडवर्ड बेसिकली विल डेफिनेटली बी यू नो पुशिंग फॉर अ प्लेस, वाज वेरी गुड, लेकिन इन माय ओपिनियन माइकल ऑलिस से भी है भाई, वो चेल्सी के साथ थोड़ा लिंक भी था उनका, लेकिन आई फील मटेटा इज दैट गाय, मटेटा एंड आयू एंड जाहा वुड बी अ ब्रिलियंट फ्रंट लाइन, और वहीं काउंटर अटैक में हमें केयरफुल रहना पड़ेगा. अगेन चेल्सी का लाइनअप, पीपल व्हाट डू यू थिंक, पहले बोलिए व्हाट फॉर्मेशन, कंसीडरिंग कि कुकुरिया नहीं है फिट 100%, what formation will Chelsea play? आप लोग बोलिए in the comment section and then we can talk, because in my opinion first game में yes 3-5-2 will he change so much? I doubt it. मैं personally बोलूँ तो I doubt it. He will probably go with that. Yes, 1-1 था, लेकिन we should have won that game. Let's be honest. जो Salzburg के साथ था. Plus हमारा भी midweek game है. Remember that. तो इतने I know international break में he would have practiced with a lot of players, but I don't think it's convincing enough कि यार आप एक game के बाद change करो.
That is the only reason. Or plus, let's be honest, as much as मैं चिलवेल बोल रहा हूँ, would you have more assurance कि भाई चिलवेल 90 मिनट्स के लिए करेगा ठीक, या go with the back three? I'm just saying that. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हो यहाँ पे. Kepa, James, Fofana, Koulibaly, Silva, Chile, Kova, Georgie, Sterling, Broya, Havertz. Okay, interesting that. Interesting people. Let's see. Again, मैं यहाँ पे screen share करने वाला हूँ. Again, I also believe therein Kepa might actually start क्योंकि वो kind of वो ignore कर दिए वो वाला question. ये clearly बोले नहीं मेंडी के साथ. Unless I missed it. ठीक है. So I have a feeling that Kepa might start this one, and Mendy might come in for the Champions League game in midweek against Milan. बहुत ही बड़ा game है भाई midweek में. Again हम Wednesday night को खेल रहे हैं, तो maybe थोड़ा सा वो help करता है Chelsea को compared to other teams. You can say that because हाँ teams are also playing on Tuesday night. ठीक है, तो मैं अभी डाल रहा हूँ Kepa को. Everyone आप लोग भी बोलिए whether you agree or disagree with that. Along with that, I am going to be putting. ओके यहाँ पर आई बिलीव पहले मैच में जो शॉक दिया था नॉट प्लेइंग फोफाना एंड बेसिकली कुलीबाली, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों चेंज होंगे आई डाउट इट. तो व्हाट मैं सोच रहा हूँ भाई थियागो सिल्वा तो डेफिनेटली रहेंगे, या डिस्पाइट बेसिकली प्लेइंग फॉर ब्राजील, डिस्पाइट ट्रैवलिंग, मैं बोल रहा हूँ कि वो रहेंगे कंटिन्यूटी के लिए और कुछ नहीं. ठीक है, बाय द वे वो हाई में he'll be on high. Thiago Silva has basically come after becoming the highest tapped player for Brazil. Oh, that's huge भाई. वो Thiago Silva हो जाए यार in the chat सब लोग, come on. And right center back मुझे लगता है एसपी होंगे. Fofana might not start this one as well, मुझे फीलिंग आ रही है. Yes, काउंटर है, पेस है, फिजिकलिटी है क्रिस्टल पैलेस की, लेकिन वो ये 3 द बैक आई बिलीव और कंटिन्यूटी के चक्कर में देखकर आई फील इट शुड बी गुड इनफ. और मे बी टूकल जो करते थे, रीस जेम्स को खिलाते थे, तो राइट सेंटर बैक, एस्पीड राइट विंग बैक, आई होप नॉट, क्योंकि एक साइड डिफेंसिव होता है पॉटर का, एक साइड होता है अटैक. लेकिन अगेन कैन वी स्विच टू अ बैक फोर व्हेन से वी आर अटैकिंग, व्हेन वी आर डिफेंडिंग रादर, जैसे हुआ था सॉल्जबर्ग के साथ, वो थोड़ा डाउट है कंसिडरिंग दिस. दैट्स द ओनली कंसर्न इस फॉर्मेशन में, because we don't have that natural left-footed left center half apart from basically Kukurea, right? तो इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ वो. And right midfield I am going with of course Reece James, no two ways about it. I'm not saying कि भाई Aspi will be playing there unlike जो टुकल करते थे. हाँ, left midfield Sterling continue करेंगे because भाई उस गेम में lot of criticism था from certain sections कि why play Sterling as a wing back, लेकिन again वो एक Trossard वाला रोल खेल रहे, so I believe it is good. Or he scored a goal, so you have to give it that. And of course, pace है even on the wings of Crystal Palace. So वहाँ पे Sterling and James will be more useful in my opinion. ठीक है, Cam definitely I'm putting in Mason Mount. Decent international break उनके लिए comparatively. And of course उस मैच में भी look better compared to last 3-4 हफ्ते. What I can say, right? CDM, like I said, I'll probably go with Jorginho and Kovacic. ये मेरा रहेगा. Jovetic is what I'm expecting for a Chelsea lineup. And of course, strikers, yes, Havertz just playing in behind, लेकिन Havertz वापस से शुरू करेंगे, not a Broya. Broya का इंटरव्यू देखा सब लोग ने? Wow, as in that was inspiring, bro. I must say that was inspiring. लेकिन Broya, ब्यूटीफुल इम्पैक्ट भाई सॉल्जबर्ग के गेम में भी, तो ही विल डेफिनेटली कम ऑन, वो आएंगे. लेकिन ये और ओबामेयांग के लिए आई थिंक ही हैड रेस्पेक्टफुल वर्ड्स, दैट इज पॉटर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो प्रीटी श्योर वो शुरू करेंगे. एंड ऑफ कोर्स it's high time that Aubameyang gets a goal. Let's get real. ठीक है, लेकिन let me take the chats as well यहाँ पे. Yes, absolutely, let's smash the like button. CFC Blues certainly helps. I think next window Chelsea will come hard. This window is also good, but this was first window for new owners. Yeah, you can say that. Aspi is a natural leader. I feel very sad he did not come to Barcelona. We need a leader at the back. Hasib, yeah, exactly. Uska leadership is missed, but again, is he looking the part really? I understand the criticism of Aspi Quetaka. I don't think he's been so convincing. सच में बोलो तो he's not been so convincing at all. लेकिन वही है, I think new regime है, तो looks like he also has some more motivation than usual. So that will be good for him. Arsenal have massive advantage because Arsenal players were rested for 2 weeks. Yeah, by the way, us par aayenge Andy. I'm just starting it. By the way, we are going to be discussing all the matches. To do stick around, people. Rafael is more physical than Nkunku. Premier League needs physical players. You can say that, bhai Tanmay. Lekin what about Manchester City? So the thing is, yes, Potter का जो ढंग है play करने का, it's not very different when it comes to basically a Tuchel. But I certainly believe that Rafael Leao is, yes, better. But if Potter wants to really succeed with Chelsea, मुझे लगता है
not only does he have to get the results, he has to get even the game play, क्योंकि lot of forwards हमारे खुश नहीं थे, तो थोड़ा सा free flowing football होगा, तो I believe वहां पर clearly that I can see Nkunku kind of fitting more boxes. सच में बोलूं तो हाँ, मैं तो पर्सनली रफाएलियो प्रेफर करता हूँ, मैंने बोला भी है पहले बहुत बार. Tuchel will be a great man for Newcastle to take them. Sorry, with all due respect to Newcastle, come on, bro. Tuchel has to be in the top 7-8 bracket that we are talking about in world football in terms of management. So even in clubs, he deserves that. सच में बोलता हूँ, that's my honest confession. Chelsea will concede on counter. Okay, तो already एक prediction आ रहा है भाई ऋषभ से. Chelsea will concede counter, especially जो backline settle नहीं है, तो I understand ऋषभ जो बोल रहे हैं, but that's why हमें score करना जरूरी है इसमें. And that's why मैं जा रहा हूँ with the confidence players जो score कर रहे हैं, like Mount and Havertz have scored finally. That's why I'm going with them rather than trying out maybe a Pulisic etc. जो हग रहे. सच में बोले, even for USA, Pulisic is not doing well. I have to be honest in terms of scoring. कुलिबाली, सिल्वा, फोफाना, तन्मय बोल रहे हैं. हाँ, दिस सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यही होगा चेल्सी का बैकलाइन व्हेन दे वर साइन कुलिबाली, फोफाना. लेकिन अगेन द फैक्ट इज अगर एस्पी खेलेंगे तो ही विल प्रोबब्ली प्ले इन द बैक थ्री इन द राइट सेंटर बैक, नहीं तो ही विल नॉट प्ले. मे बी मिलान का बिगर गेम है, आई थिंक इन दैट गेम the fact is, और वो भी घर पे है, तो looks like we might have some rotation there. But Anderson is dangerous on his long balls. Yeah bro, absolutely. Anderson has been very good. Of course भाई सब लोग को याद होगा Anderson against David Nunes, और वो जो एक moment था, maybe Anderson has that as well. तो भाई we have to be careful क्योंकि it's a derby after all. You never know, they might rile us up. वो होगा absolutely. Arteta would be mourning. यहाँ पर आएंगे Andy. Again, I'm starting this. I'm coming just in a couple of minutes. आप रोया का इंटरव्यू देखिए, बिल्कुल भाई बहुत इंस्पायरिंग था. Like I said, RLC has goalkeeper again. Gallagher and RLC खेले हुए हैं for Crystal Palace. So pretty sure I think both will come on, especially जो midweek में हुआ था in terms of last midweek international matches. वहाँ पर I think they were with Chelsea. तो I think यहाँ पर एक plus point है with them being fresher compared to other players. Graham Potter turns Harry Potter at Sellers Park. Let's see. Nice that one, Nathan. October and November fixtures are crazy. Bhai, I don't see Aspi starting because of Zaha. हाँ, but वही है. Maybe instructions रहेंगे Darren कि भाई Reece James has actually got to be more defensive than usual, and Sterling आपका outlet रहेगा left wing में. तो वहाँ पर I can see Reece James versus Zaha more than Aspi versus Zaha. That's just my suggestion. लेकिन हाँ, maybe you're right. Report suggesting Chelsea seriously interested in Bellingham. Shashwat, by the way, big up भाई Darren, Shashwat, all members. Big up आपको. और again, people, members only stream is something that we are due. So we're going to be doing that, and I'll be messaging you. और शाश्वत आपका भी भाई, आप मुझे अपना Instagram ID please मुझे DM करिए. I will add you to a group and we'll probably have more discussions even on Discord. People who do not know, we have a Discord. We got to be doing a stream वहाँ पर भी very very soon. ठीक है? It's in the description below. Report suggesting Chelsea seriously interested in Bellingham, but it's worth investing time. Shashwat, as much as I would love Bellingham, reality is that Bellingham के लिए I realistically don't see Chelsea getting him. So you're right. As in time क्यों खोटी करना? You can probably go on for maybe even a Declan Rice is more as in doable in my opinion. सच में बोल रहा हूँ मैं शाश्वत. Bellingham के लिए entire world is fighting यार. तो यहाँ पर I see a point. Barella, he's not the same player in my opinion. By Bellingham is more like a out and out box to box, I would say. Barella is more like he's better at the end of things. So I would say he's better like maybe 3-1-4-2 formation kind of formation, or जहाँ पर you have a core DM behind you. Whereas Bellingham can do a little bit more. He's better in the double pivot for example. वो खेल सकते हैं जो आप देखते हैं इंग्लैंड के साथ. लेकिन वहाँ Barella I don't see that, to be very honest. Kepa, Fufu, Thiago, Kalidu, Reece, Chilwell. Okay, Chilwell बोल रहे हैं आप लोग. Wolves, Georgie, Owa, Mount, Havertz, Sterling. Interesting. तो भाई अरे we have Chelsea fans in the house as well. Welcome, Just Viola. Again हो जाए भाई. एक quick prediction हो जाए everyone. It is Crystal Palace vs Chelsea. As I introduce Utkarsh भाई to the stream. भाई Utkarsh. Sorry for being late, Ankit भैया. अरे नो टेंशन यार, नो टेंशन. मतलब एट द सेम टाइम यार हम एज इट इज इतना सारा न्यूज़ है. मतलब आई डोंट नो इफ यू हर्ड उत्कर्ष अबाउट क्रिस्टोफर एंकुंकू. आई हर्ड, मैंने रोमानो को वीडियो देखा अभी. जस्ट आई गॉट ऑफ माय क्लासेस एंड फिर मैंने देखा. मैंने कहा मैं क्योंकि आर्सेनल की मैं वो देख रहा था, आर्टेटा की 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने लाइव तो नहीं देखी, तो मैंने कहा पढ़ लेता हूँ क्या वो, तो मैं पढ़ रहा था. फिर मैंने ऐसे यूट्यूब खोला, एंकुंकू टू चेल्सी, मैंने ये क्या हो रहा है. फिर मैंने पढ़ा. अच्छा, मैंने कहा अच्छा अभी हो नहीं रहा लेकिन हो सकता है.
अरे मैंने शॉर्ट्स निकाला था ना उसमें, आई गॉट अ लॉट ऑफ हेट, लाइक क्या भाई ऐसे क्या होता है, आप खुद ही बोलते हो इंटरनेशनल ब्रेक में ना ज्यादा तवज्जो मत दिया करो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर न्यूज, बट दिस वन लुक लिटिल बिट मोर, क्योंकि मेडिकल वो सब हो गया, मतलब प्रिकॉशनरी मेडिकल हो गया, मतलब इट्स क्लियर दैट एक सीरियस इंटरेस्ट है। लेकिन क्विक में आई नो विल गेट टू द नॉर्थ लंडन डर्बी क्विकली यार, लेकिन उत्कर्ष व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाई डू यू थिंक चेल्सी के इतने सारे न्यूज जो बाहर आ रहे हैं ना, देन लुक टॉक अबाउट डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, टॉक अबाउट अदर थिंग्स, तो is Todd Boehly going the right way? मतलब he's sacking people left, right, center, and of course इतने सारे जो न्यूज आ रहे हैं, मतलब बहुत ही कोलैबोरेटिव अप्रोच है, बहुत ही ओपन अप्रोच है। इट्स टोटली डिफरेंट फॉर द क्लब, लाइक हम हमेशा बिहाइंड क्लोज डोर्स करते थे, बट व्हाट आर यू सीइंग एज अ न्यूट्रल? एज ए न्यूट्रल अंकित, जो बोली हैज जस्ट स्टार्टेड, तो मैं उसकी ओनरशिप या उसके जो काम करने का तरीका है उसके बारे में मैं इतना वेल इन्फॉर्म्ड हूं नहीं, तो मैं उसको कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक ही दिक्कत है, आई थिंक ही इज गोना रन इनटू अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसने सारी चीजें हेड ऑन ले ली हैं, एंड ही हैज नेवर मैनेज अ यूरोपियन टॉप क्लब। क्योंकि अमेरिकन फुटबॉल, उसको जो भी मैं अमेरिकन फुटबॉल का ही जो भी उसकी ओनरशिप है वहां पे, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, तो उसमें वो मैनेज करता है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पे आ गया ना, देयर आर, मेरे ख्याल से फुटबॉल इज इन इंग्लैंड और द प्रीमियर लीग इज मच बिगर देन एनी अदर स्पोर्ट। तो यहाँ पे जो भी कर रहे हो उसकी रीच बहुत ज्यादा होगी। तो हाउ डज ही मैनेज थिंग्स, एंड जैसे मैंने कहा, उसने हेड ऑन हर चीज ले ली, सारी जिम्मेदारी खुद पे ले ली है। चेक को निकाल दिया और ग्रैंड सागर को निकाल दिया, और भी दो बंदे उसे निकाले हैं, तो ऑब्वियसली टुकल भी जा चुके हैं। एक्चुअली वही ना, देखिए आधे लोग को तो वो खुद निकाले, आधे लोग खुद चले जाए। चेक एक्चुअली इट वाज द अदर वे अराउंड आई बिलीव, लेकिन मरीना का बेसिकली इट वाज मोर लाइक ही एक्चुअली वांटेड मरीना आउट इज व्हाट द न्यूज इज, क्योंकि वो लुकाकू सिचुएशन ऑल दैट राइट, जो डिसएग्रीमेंट थी। लेकिन हाँ, डीसी हाइप यहाँ पर मैं इतना हाइप नहीं करूंगा इस न्यूज को, टॉकिंग अबाउट डीसी हाइप, लेकिन मैं इतना बोलूंगा, लाइप्जिग के जो है स्पोर्टिंग डायरेक्टर, आई थिंक नाउ एज थिंग्स स्टैंड दैट इज द क्लोजेस्ट जो लिंक आई है। लेकिन अगेन भाई इतने सारे लिंक्स आ रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर, वहां पर अभी ही नीड्स टू टेक टाइम, और ही इज डूइंग द राइट थिंग माय ओपिनियन। I don't want Chelsea to kind of hire for the sake of it, as much as we understand the sporting plan, then maybe वो खुद भी समझना चाह रहे हैं ना कि पॉटर एज अ मैनेजर क्या चाह रहे हैं। Unless he knows about Potter, what he does, I don't think वो will be able to get the right person. So looks like वो slowly but steadily होगा। Let's see, I'm hoping कि हो जाए before World Cup। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू द प्रेडिक्शंस अबाउट पैलेस एंड चेल्सी, भाई उत्कर्ष आपका क्या है, पैलेस चेल्सी क्या लग रहा है? जहा मास्टर क्लास की पॉटर बॉल? म्यूट पर आप शायद, कोई नहीं। ऑडिबल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, मैं यहाँ पे मेरी और म्यूट की कहानी काफी पुरानी है, मैं बहुत बार म्यूट पे बोलने लगता हूँ। तो मैं कह रहा था आई विल बैक माय मैन, आई विल बैक वेरा इन दिस वन। ये नहीं कह रहा हूँ पैलेस जीतने वाली है, लेकिन आई थिंक विल गो द ड्रॉ 1-1, ज़हा टू स्कोर। ओह माय गॉड, 1-1 भाई। अब मेरे प्रीमियर लीग टेबल दिखाया था, अगेन आर्सेनल फैन द हाउस, तो आर्सेनल फैन तो भाई खुश होगा, वापस दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन मतलब वी नीड, एक बात बताऊं, इट्स वेरी लोनली एट द टॉप। oh my god, that मतलब is it really coming bro? I don't know, I didn't expect that कोई नहीं। लेकिन अपना भी मौका आएगा, अपना भी टोटल मौका आएगा। लेकिन कमिंग टू दिस, इन माय ओपिनियन बर्ली टॉक्स टू मच, जस्ट व्हाइल आई सेइंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट, बहुत इंटरेस्टिंग। बाय द वे उत्कर्ष इज जस्ट गोइंग टू कम इन अ मिनट, डोंट वरी अबाउट दैट गाइस। टॉड बर्ली इज एरोगेंट एंड विदाउट नोइंग फुटबॉल नॉलेज, आई अग्री देयर। लेकिन सी it's a cultural thing, it comes across as arrogance. Again I can probably personally share as well, I've kind of worked there for a while, so I know that, again I'm generalizing, it's not right on my part, but at the same time एक cultural difference clearly दिख रहा है in terms of basically how they go about things, how they kind of say even speak, वो clearly interviews में दिखता है। And Wrestle Universe says 2-1 to Palace, okay। Rifat Khan says 3 to win for Palace। अरे माय गॉड भाई, 1-1 जो था, सब लोग ने देखा था सॉल्जबर्ग के साथ चेल्सी का गेम। यस, पैलेस हैव नॉट बीन इन गुड फॉर्म ईदर बाय द वे। हाँ, रिजल्ट्स नहीं आ रहे बिकॉज दे हैव हैड इंजरीज, लेकिन दे आर हैविंग पीपल कमिंग बैक, जैसे मैंने बोला। बट स्टिल यार, सॉल्जबर्ग वाला गेम आर्ग्यूबली वी वर द बेटर टीम डिस्पाइट नॉट एक्चुअली गेटिंग दैट 3 points। आई नो इट वाज चैंपियंस लीग, कम ऑन, एंड इट्स डेस्परेट टाइम्स फॉर चेल्सी ऑलरेडी। मैं तो बोलता हूं, इफ वी वांट टू फाइट फॉर दैट टॉप 3 टॉप 4 स्पॉट, we have to get in there, और ये वीकेंड इज वेरी वेरी क्रूशियल। एंड द रीजन बीइंग दैट, देखिए मैनचेस्टर डर्बी है, आर्ग्यूबली यू कैन से दोनों ही मैनचेस्टर क्लब्स कैन ड्रॉप पॉइंट्स। नॉर्थ लंडन डर्बी है, टॉटनहम आर्सेनल कैन ड्रॉप पॉइंट्स, एंड वी हैव टू टेक द एक्सेलरेशन मोड, और हमें चाहिए एक विक्ट्री।
Yes, लिवरपूल भी सेम बोलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर. यहाँ पर आई एम जस्ट वेटिंग फॉर उत्कर्ष टू रीजॉइन. वो ज्वाइन करने वाले हैं. आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल एरर, इट हैजंट, कोई नहीं. आर्सेनल विन अगेंस्ट टॉटनहम. अब चाहे वो जैसे भी आए, बस जीतेगा तो आर्सेनल. चलो उसके बारे में उत्कर्ष आ गया, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इवन अ स्पर्स फैन टू जॉइन अस eagerly and anticipating North London and Manchester derby. Yeah, by the way, Manchester derby we did cover in detail yesterday for people who might have missed it. 1-0 to Chelsea. Just while finally we have a result in Chelsea's favor. Again, it's an away game. It is basically the first EPL game for Potter at Chelsea. So, in my opinion, yes, Sellers Park will be up for it. मैं जा रहा हूं यहां पर. द फैक्ट इज हैवर्ट्स और माउंट दोनों स्कोर किए हैं इंटरनेशनल ब्रेक. और यस, इट्स इंटरनेशनल ब्रेक के बाद इतना इजी नहीं है, इतने लोग वापस आना एंड ऑल दैट. फिर भी मैं जा रहा हूं चेल्सी का. आर्सेनल ज्यादा रहेगा इस पर्टिकुलर वीकेंड में, एंड आई एम सेइंग दैट चेल्सी टू गेट दैट विक्ट्री. लेकिन हम कंसीड करेंगे. आई एम नॉट गोइंग 1-0, आई एम गोइंग 2-1. Yes, similar to the West Ham game, ड्रामा मिलेगा आपको 100%. तो be careful when you're picking players for the FPL. Good for Arsenal. Kulu might get injured. Yeah, actually, Kulu is actually injured. He's actually injured, and we'll come to that absolutely. Hello Ankit bhai, hello Rishi, कैसे हो भाई? Todd Bully told he wants all, yeah, Premier League All Star versus other leagues के All Star, absolutely. That, and I think that will be fun. That is a little bit more fun in my opinion compared to North versus South, etc. Yeah, it's just my opinion. आप लोग बोलिए. Okay, I won't be surprised. My boy Zaha to score 2-2. Oh my god. Bhai, okay, Utkarsh has come back just about. चलो भाई. सॉरी अगेन. मैं जरा सा मेरे वो काम आ गया था मेरे को जाना पड़ा था. कोई नहीं, तो एक प्रॉब्लम्स हो गई थी घर में थोड़ी, तो मेरे को बुला लिया बोल गया. रही भाई Crystal Palace getting the better of Chelsea or it'll be a draw. So going with you is looks like, लेकिन again 4-4-3 with Brady as the quarterback. Great. भाई मैंने 2-1 बोला है. Again wearing my Chelsea tinted glasses, no two ways about it. लेकिन वो ये पॉटर का I think इतना ज्यादा है ना ओनस कि होना ही यार ये तो 1-1 draw बोले. चलो ठीक है. Again, we'll come back to the transfer stories as well about all clubs. Let's move on to the next match and we'll come back to the Chelsea talks as well towards the end of the stream. और यस, नॉर्थ लंडन डार्बी भाई. उत्कर्ष प्रीटी श्योर. अगेन मैं आप चले गए थे, लेकिन ये तो दिखाना बनता है यार. आई हैव टू गिव दिस टू उत्कर्ष मैन. मतलब ही डिजर्व्स इट. आई डोंट थिंक चेल्सी डिजर्व्स इट, लेकिन आई थिंक दे डिजर्व इट. लाइक या, यू आर टॉप ऑफ द टेबल एज थिंग्स स्टैंड, बट टॉटनम आर थर्ड, जस्ट अ पॉइंट बिहाइंड. ठीक है, तो कंसिडरिंग दैट आई बिलीव लास्ट गेम जो था, एक डेंजर मैन हमें पता है भाई टॉटनम में, ह्यूंग-मिन सॉन. And again, I'm waiting for the Tottenham fan Eugin also to join. I'll get his opinion. कि भाई जो लास्ट गेम में हुआ है टॉटनम का अगेंस्ट लेस्टर, और यस आर्सेनल है आल्सो. आई थिंक आर्सेनल का पहला क्लीन शीट था इन 5 गेम्स, समथिंग लाइक दैट, इन द प्रीमियर लीग अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. तो इट्स गुड. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रोबेबली एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नॉट 100% श्योर ऑन दैट, लेकिन क्लीन शीट हमने रखे तो नहीं थी. हमने पहला मैच क्लीन शीट रखा था, उसके बाद से तो नहीं रखी है. नहीं, मैं देख रहा हूं, नहीं था. तो कंसिडरिंग दैट वो हिटिंग ऑन द काउंटर वाला चीज है ना, मतलब क्या लगता है आर्टेटा को चेंज करेगा? द फैक्ट इज सॉन फैक्टर काउंटर जो बोलते हैं ना, इट्स एन अवे गेम फॉर स्पर्स एनीवे. तो मतलब व्हाट डू यू थिंक एक सेटअप रहेगा जनरली? व्हाट इज योर लाइनअप एंड व्हाट डू यू थिंक टैक्टिक्स रहेगा फॉर दिस बिग गेम? अंकित भाई देखो, सबसे पहली बात आती है इंजरीज की, क्योंकि वी आर स्ट्रगलिंग विद इंजरीज येट अगेन. ऑल्दो हमारे पास एडिशंस किए हैं स्क्वाड में, एंड अभी जो न्यूज आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, दैट इज वेरी गुड. टियरनी, जिंचेंको एंड पार्टे भाई, तो इन ये तीन में से दो बंदे तो ऑब्वियसली विल बी इन द मेन टीम. दे आर प्लेइंग विद, दे आर ट्रेनिंग विद द स्क्वाड, दे आर प्लेइंग विद द स्क्वाड, दे आर इंक्लूडेड इन द स्क्वाड. स्टार्ट करते नहीं करते वो वाला बात नहीं, प्रॉब्ली अगर इफ दे आर इंक्लूडेड इन द स्क्वाड दे विल स्टार्ट. इंजर्ड प्लेयर को स्क्वाड में रखने का मतलब है नहीं. तो ये निकल के आती कि फिट है भाई ये प्लेयर. अब विद टियरनी या विद जिंचेंको गेम बहुत बदल जाता है हमारा. जिंचेंको के साथ आपको पता है भाई, ऑन द बॉल ही कैन प्ले इनसाइड, ही कैन गो आउटसाइड, बट जिंचेंको के साथ दिक्कत क्या है? ऑन द पेस, ऑन द काउंटर. ठीक है, जिंचेंको डजंट हैज द पेस अबाउट हिम. टियरनी का आप गोइंग फॉरवर्ड आपको उतना नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन डिफेंसिवली टियरनी ज्यादा सॉलिड है भाई. एक नेचुरल जो फुल बैक होता है टियरनी वो है. तो अब देखो, अब मुझे अपनी टीम पिक करनी है आर्सेनल के हिसाब से, तो आई विल प्ले ऑन माय स्ट्रेंथ एंड आई विल गो विद जिंचेंको. आई विल बैक माय टीम कि भाई हम अपने सिस्टम पे खेलेंगे. हम ऑल्दो इट्स टॉटनहम, डेफिनेटली विल मेक सम ट्विक्स टू हैंडल देम, लेकिन वी बिलीव इन आवरसेल्व्स. हम टॉटनहम के लिए अपनी टीम चेंज नहीं करेंगे, अपना जो गेम प्लान है उसको चेंज नहीं करेंगे. आई विल गो विद जिंचेंको एंड पार्टे इन द मिडफील्ड. पार्टे अगर नहीं रहता है तो फिर गाड़ी पलट जाती है हमारे लिए, क्योंकि एलेनी भी नहीं है. सैमी लुकोंगा को मैं ट्रस्ट कर नहीं सकता. डगलस लुइस को हम ले नहीं आ पाए थे अंदर ट्रांसफर डे पे, डेडलाइन डे पे, डील डिड नॉट फाइनलाइज. तो अगर पार्टे रहता है, होपफुली ही विल बी देयर, तो फिर चीजें काफी बदल जाती हैं. डेफिनेटली आई थिंक वी विल हैव मोर ऑफ द पोजीशन. इसमें कोई दो राय है नहीं. व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट एंटोनियो कॉन्टे इन द बिग मैचेस, आपको पता है कॉन्टे क्या करने वाला है. तो वी आर डेफिनेटली हैव अ लॉट मोर पोजीशन देन टॉटनहम.
बस ये है कि हमें जब व्हेन वी लूज द बॉल एंड जब टर्नओवर होगा तो हमें नेवरी रहना है, वी हैव टू बी इन पोजीशन टू हैंडल दैट, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड के खिलाफ देखो ना, जो हमने तीसरा गोल खाया था, इतना वाहियात गोल खाया था, जैसे मैं वॉच लॉन्ग कर रहा था, मैंने एग्जैक्टली बोला था 1 मिनट पहले, जैसे हमने 3 वो सब्स्टिट्यूशन किए थे एंड वी टुक ऑफ सीडीएम को हटा के हम ले आए थे, तो हमने कहा भाई अब एक अकेला ट्रांजिशन बंदा में आराम से बीट हो रहे थे भाई आप लोग, ट्रांजिशन में बहुत इजीली बीट हो रहा था, हम लोग उसको हैंडल करना है, तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट मैच था। हम उसे खराब नहीं खेले थे, लेकिन वही था कि जब जो टॉकिंग पॉइंट्स था उस मैच उसमें यूनाइटेड डोमिनेटेड एंड यूनाइटेड टुक द मैच, यूनाइटेड डिजर्विंग विन द मैच, हम ही नहीं कह रहे मैच जिन्हें डिजर्व करते थे, बट वी आर नॉट दैट बैड, वी हैड अ फ्यू शेयर्स ऑफ चांसेस एज वेल, तो डिफेंसिवली हम सॉलिडिफाई हो जाते हैं बेसिकली इन द मिडफील्ड ट्रांजिशन, जो बॉल कर रहे हैं, जो बॉल ट्रांजिशन होती है, हाउ वी मैनेज आवर शेप, दैट इज समथिंग टू सी इफ वी डू इट वेल। तो टॉटनहम के पास भाई ऑब्वियसली केन, सॉन, रिचार्लिसन है, क्योंकि कुलिसिवस्की तो बाहर है इस मैच के लिए, तो दे कैन स्कोर गोल आउट ऑफ नथिंग, वो हो गया तो एक अलग की बात है, लेकिन हमें सस्ते गोल नहीं देने, चीप गोल्स नहीं देने, जैसे हमने यूनाइटेड के खिलाफ दिए थे, बेसिकली अपनी गलतियों पे गोल नहीं खाना है। Exactly. मतलब Andy makes a very good point यहाँ पर. Half of Spurs played in international break, whereas Arsenal players are well rested. मतलब वही है. You can argue that again. Gabriel Jesus, मतलब हम काफी बात कर चुके हैं भाई international break के दौरान. He's been one of the most unlucky players when it comes to the Brazil team, right? Again, for Arsenal point of view, it's brilliant. You would say that at least for the time being. Partey again, जैसे उत्कर्ष ने बोला है Andy that Partey is coming back from injury, but I believe as per reports he should be fit is what the optimistic as in media is saying. I think home 3-5-2 खेलना चाहिए cause Kulu is injured, Son and Kane is enough for Arsenal. मतलब वही मैं बोल रहा था because आप देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो काउंटर में हिट हो रहे थे ना, and plus the fact that अगर पार्टी इंजर्ड होते हैं भाई चांस, so that is why you might have to figure it out. लेकिन I think I'll go with उत्कर्ष क्योंकि you're right, मतलब you are top of the table, you cannot argue कि Arsenal का performances have been luck, no it's not. And we'll talk about basically head to head and basically जो हुए in the Premier League अभी तक, लेकिन जनरली आप सब लोग के भी पूछ रहा हूँ भाई, सब लोग चैट में ही बोल दीजिए, मतलब where do you rank the North London derby, this generally North London derby जो for me atmosphere wise में मैं बोल रहा था Selhurst Park जो क्रिस्टल पैलेस का मैंने शुरू किया ना प्रीव्यू, I thought Chelsea are going to a stadium वहां पर atmosphere is one of the best in the Premier League on any day, especially London derby. लेकिन generally as a match atmosphere आप बोलो तो where would you rank the North London derby, and even you can compare मतलब बाकी लीग्स के साथ, मतलब I really feel that's underrated derby नहीं? बाकी लीग्स के साथ तो आई थिंक फिर तो मैं आई विल स्टिक टू द प्रीमियर लीग, फिर बाकी लीग्स में मैं डेफिनेटली कोई ना कोई लीग मैच भूल जाऊंगा इंपॉर्टेंट, तो आई विल स्टिक टू द प्रीमियर लीग डेफिनेटली, बाय लिवरपूल का एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग। सेलर्स पार्क की आपने बात की, व्हेन लेस्टर आर प्लेइंग, व्हेन भाई उनका स्टेडियम इज एब्सोल्युटली रॉकिंग, अब जिसने लेस्टर की ट्रॉफी सीजन देखा होगा उसके बाद भी व्हेन दे वर इन द चैंपियंस लीग, भाई द एटमॉस्फेयर समथिंग एल्स, तो कुछ मैचेस कुछ स्टेडियम है भाई जो बेहतरीन है। उसके अलावा नॉर्थ लंदन डर्बी इन एमिरेट्स, सबसे एक जो अभी आपने एटमॉस्फेयर की बात की, जब हमने टॉटनहम को 4-2 हराया था एंड हमने कमबैक किया था भाई 2-1 से, उसमें गजब का एटमॉस्फेयर था। तो इफ थिंग्स आर, बस आर्सेनल के क्राउड के साथ मुझे यही थोड़ी सी दिक्कत है, इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, तो कभी कभी भाई वो कह सकते हो इम्पेशेंट हो जाते हैं थोड़े से, दे नीड टू बी पेशेंट, बस एक वो है, लेकिन द एटमॉस्फेयर इज एब्सोल्युटली क्रैकिंग, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, नॉर्थ लंदन डर्बी में इट्स वन ऑफ द बेस्ट, मतलब थोड़े उसके कह सकते हो अगली साइड्स भी हैं, लड़ाई अभी आप काफी देखने को मिलती है स्टेडियम के बाहर, मैं तो भाई that रेडी is- हूँ देखने के लिए एज ए न्यूट्रल, आई वुड लव टू सी दैट। और मतलब आई डोंट वांट इंजरीज, डोंट गेट मी रॉन्ग पीपल भाई, लेकिन वो दैट्स समथिंग दैट आप यू लुक फॉरवर्ड टू इन डार्बीज इन जनरल, मतलब इतने सारे डार्बीज हुए रीसेंट वीक्स में, तो अगेन आई वांट दिस टू बी लाइक अप एवरीथिंग, लेकिन अगेन टेक्निकली एमिरेट्स में है तो यू कैन से दैट आर्सेनल फेवरेट, लाइक 6 कंसेक्यूटिव आपने जीता है शायद एमिरेट्स में, जहां तक मुझे याद है, लास्ट 6 डर्बीज लास्ट सीजन डेफिनेटली बीट देम, उसके पहले बीट नहीं, 6 मुझे मैं पक्का 6 वाले स्टार्ट मैंने देखा नहीं है, तो 6 तो मुझे भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो आई विल बैक यू। नहीं मतलब जनरली एट द एमिरेट्स आल्सो यू आर हैविंग बहुत अच्छा एक रहा है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दैट फोर्टे काइंड ऑफ थिंग तो भाई, लेकिन नॉर्थ लंदन डर्बी में फॉर्म और एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द विंडो यहाँ पर क्लियरली, तो मैनेजमेंट में आर्टेटा अगेन बहुत ही अच्छे किया, आई विल नॉट डिनाई दैट, लेकिन अगेन ऑल और नथिंग भाई सब लोग ने देखा है, होपफुली मैंने पूरा नहीं देखा है, बट आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ क्लिप्स, ऑलमोस्ट ऑल बता दो। हैविंग सेड दैट वही है बिग गेम मेंटालिटी, बिग गेम मैनेजर, यस आई हेट टू से इट भाई, टॉटनहम ने जो 2-2 लिया था चेल्सी के अगेंस्ट, यस रेफरी हेल्प्ड इट, लेकिन समवेयर ऑन द लाइन कॉन्टे बिग गेम्स में यू सी दैट एक मेंटालिटी, लास्ट सीजन किसके साथ था आई रिमेंबर, लिवरपूल के साथ एक 2-2, आई रिमेंबर दैट गेम बहुत ही अच्छा था, टुवर्ड्स जस्ट कॉन्टे हैड कम, तो in these big games as a manager, मतलब how have you seen Arteta, क्योंकि recently आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हार के आ रहे हो, मतलब I know you wouldn't blame that for one game, लेकिन generally how have you seen him in big games?
मैं मतलब पूरा आर्टेटा की रेन मैं डिस्कस करूं तो अगर हम कभी कभी खराब खेलते हैं तो वी आर एब्सोल्युटली बैटर्ड. वी हैव सीन लाइक 4-0 अगेंस्ट लिवरपूल. सिटी के खिलाफ कितनी बार हमारी पिटाइयां हुई हैं, लेकिन व्हेन वी आर ऑन इट वी कैन बीट एनीबॉडी. एक ही वाली बात है कि वी हैव बीटन एवरीबॉडी बारिंग सिटी इन माय ओपिनियन, क्योंकि सिटी से वी हैव सम वेरी क्लोज मैचेस जो हमें टेक्निकली जीतने चाहिए थे बट वी डिड नॉट विन इट. लेकिन उसके अलावा हम बीट तो किसी को कर सकते. वी बीटन चेल्सी लास्ट सीजन ही बीट किया था. वी बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन. एंड स्पर्स से हम रेड कार्ड खा गए थे. स्पर्स को भी हमने बहुत हराया भाई अंडर आर्टेटा. ठीक है. ऑब्वियसली वन द एफए कप. लिवरपूल को भी भाई हमने बीट किया है. आपको याद नहीं होगा, इट वाज अ 2-1. इट वाज अ गेम फुल ऑफ मिस्टेक्स, लेकिन वी डिड बीट देम. आफ्टर दैट मैच मुझे प्रीमियर लीग में था 2-3 साल पहले का. उसके पहले कोई मतलब इंपॉर्टेंट मैच था, ये वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट था नहीं. तो आफ्टर दैट 5-4 दैट लिवरपूल वन इन द कैराबाओ कप, उसके बाद हमने शायद उनको बीट किया था. तो वी आर बीटन एवरीबॉडी बारिंग सिटी. तो हम ऐसा नहीं बड़ी टीम को हम बीट नहीं कर रहे हैं, वी कैन डेफिनेटली बीट देम. लेकिन एक वाली बात है कि पहले मैं मैच ही वाली नहीं बता सकता कंफर्म कि वी आर गोना विन दिस, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी अभी तक नहीं है. एंड दैट हैज बीन द प्रॉब्लम. इस सीजन अभी तक कंसिस्टेंसी है, तो यहाँ से बिल्ड ऑन करना है, क्योंकि पहला टेस्ट वाज नॉट द बेस्ट. ऑब्वियसली लॉस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन एक ये है अब हमारे होम पे है भाई, तो डेफिनेटली वी हैव टू विन दिस वन. और यहाँ अगर ये जीत जाता है ना, फिर यहाँ से मोमेंटम भाई वर्ल्ड कप तक कोई ब्रेक नहीं है. तो वहां ये तक मंथ अगर क्रूशियल है यार. सब लोग बोल रहे हैं ये मंथ में हम्म, जो होगा ना, दैट विल बी डिटरमाइनिंग कि भाई जो फेवरेट्स है प्रीमियर लीग का. सिंपल एज हम्म, दैट. और मतलब आई नो हम उसकी भी बात करेंगे क्योंकि बाकी टीम्स के बारे में बात करना है क्विकली. लेकिन भाई एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, टॉकिंग अबाउट प्लेइंग एट होम. जहां तक मुझे पता है लास्ट वीकेंड आर्सेनल वुमेन आल्सो बीट स्पर्स वुमेन. आई हाँ थिंक इट बीट वाज स्पर्स यस. बैटरिंग ऑफ 4-0. ठीक है. दे क्रिएटेड हिस्ट्री. तो समवेयर ऑन द लाइन एक ब्रैगिंग राइट. एंड अगेन हम लोग यहाँ बैठकर हम रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन प्रीटी श्योर पीपल हु आर एक्चुअली जो भी चैट में भाई स्पेशली लंदन में, प्रीटी श्योर आप लोग बोलोगे इवन दैट आई थिंक Arsenal women battering Spurs women 4-0, that will add to this. So Spurs might be that एक्चुअल extra ड्रामा. charged up because of that. I don't know, मतलब it'll matter or not. You can say that. But last जो Arsenal का मैच था वहां पर I remember Fabio Vieira played, right? और मुझे काफी अच्छा लगा Fabio Vieira. लास्ट मैच ब्रेंटफोर्ड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. ऑब्वियसली भाई वो मतलब आई वाज नॉट, उसने स्टार्ट बहुत खास नहीं किया था, लेकिन ये वाली बात है ना, आप बहुत क्लोजली देखोगे गेम में तब उसका आपको रोल पता चलेगा. इफ यू आर वाचिंग इट पैसिवली आपको लगेगा फेबियो ने कुछ नहीं किया, ही केम आउट स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, लेकिन उसका उसका इंपैक्ट नहीं था. बट द मोमेंट समटाइम्स ही वाज ऑन द राइट, समटाइम्स ही वाज ऑन द इन द मिडिल, कभी कभी वो लेफ्ट पे भी जा रहा था, वो ड्रिफ्ट कर रहा था पूरी तरफ. एंड ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ही न्यू व्हाट प्लेस वेन टू बी. भाई उसको पता था, उसका दिमाग चल रहा था कि मुझे अभी यहाँ होना चाहिए, मुझे अभी यहाँ होना चाहिए. एंड आर्टेटा ने आगे तारीफ की थी एंड ही कैप्ड ऑफ द परफॉर्मेंस विद द ब्रिलियंट गोल. भाई वो गोल मतलब सही बता रहा हूँ, वो गोल इफ यू हैड टू स्कोर दैट गोल ना, मैं बता रहा हूँ 100 में से 100 बार इफ यू टेक अ शॉट दैट इज नॉट गोइंग इन, बिना बैक लिफ्ट के, बिना खड़े खड़े. he did not actually put a lot of power in it भाई. he was just standing there and flick shot से क्रॉस मारता ना बंदे खड़े खड़े. उसने लिटरली टुक अ शॉट, कॉर्नर, हिट द पोस्ट, गेट इन. भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस थी फेबियो का. देखते हैं इसमें ओडेगार्ड पे मुझे इंजरी अपडेट है नहीं, तो किसी की होगी भाई चैट में तो डू लेट मी नो व्हाट्स द इंजरी अपडेट ऑन ओडेगार्ड. इफ ओडेगार्ड इज या नॉट फुली मतलब फिट. अगेन देयर आर मिक्स्ड रिपोर्ट्स यहाँ पर. तो आई एम गेसिंग दैट यू नो वही है, मतलब इफ एंड बट्स वाला केस है. तो आई एम नॉट श्योर इफ ओडेगार्ड इज 100% फिट, लेकिन वही इसलिए हम Probably फैबियो we'll की go with बात कर रहे हैं. Fabio. No, या बिकॉज I think that is a too soon to say, Andy. Fabio is not. I would not say the upgrade. Those are two very different kinds of players. On off the ball, Odegaard provides you a lot of pressing. भाई अभी तो Jesus आ गया तो he does his share as well. लेकिन last season देखो, he was the first man to press. And अब Odegaard को इसी reason से captain बनाया गया. He is one of the most important system in the attacking on the ball and off the ball as well. He gets his number of goals. He gets his number of assists. A great ऑफ द पिच फ्लैट. ठीक है, उसकी देखो कभी टैंट्रम शो करते हुए नहीं दिखेगा, ऑलवेज ऑन साइड विद द मैनेजर. तो ही इज अ ग्रेट प्लेयर. ये फेबियो इज अ डिफरेंट क्वालिटी प्लेयर. फेबियो हैज डेफिनेटली हैज दैट एक्स फैक्टर अबाउट हिम, लेकिन आई वुडंट से ही इज एन अपग्रेड ऑन ओडेगार्ड. इट्स गुड टू हैव टू ग्रेट ऑप्शंस. मतलब वही थोड़ा फिजिकल एलिमेंट हमें जूरीज आउट टू बी वेरी ऑनेस्ट. नहीं क्या मतलब इतना हमने देखा नहीं है. स्पेशली अगर लोग बोल रहे हैं भाई टॉटनहम माइट गो 3-5, आई एक्चुअली सेंस दैट कि टॉटनहम माइट जस्ट डू दैट कंसीडरिंग कि उनका भी यूरोप मैच है. आर्सेनल किसके साथ खेल रही है भाई थर्सडे? बोर्डो आर्सेनल. ग्लिम्ट. ओके. सो लास्ट सीजन पता है भाई क्या किया था रोमा बोर्डो के ग्लिम्ट ने. पीट दिया था 6. या तो आई नो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज यू कैन से दैट आर्सेनल हैव वर्सेस टॉटनहम. आई थिंक ट्यूसडे नाइट को खेल रही है. ठीक है, तो दैट माइट बी एक्चुअली यू नो थोड़ा सा एडवांटेज फॉर आर्सेनल, आई मस्ट से, अभी के लिए एटलीस्ट. लेकिन अगर टॉटनहम खेले से फॉर एग्जांपल दे गो विद बिसूमा एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर, प्लस दे ऑलरेडी हैव वहां पर हॉयबर्ग और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेंटंकर इज ऑब्वियस राइट. वो आई थिंक दे केम अबाउट फिट. और बाय द वे टॉकिंग अबाउट हॉयबर्ग, उन्होंने ऑलमोस्ट इंजर किया था अपने प्लेयर को, बट आई बिलीव पेरिसिच दैट बट ही इज बैक एज वेल. तो माइट बी दैट यू नो ही माइट रिस्क ओडेगार्ड अगर थोड़े से फिट हो. लेकिन आई मीन टॉकिंग अबाउट द विंग्स,
मार्किनियोस यार क्या देख, मतलब जो मैंने देखा ना, आई नो इट वाज यूरोपा लीग मैच, बट आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन आर्सेनल ऑफ मे बी द प्रीवियस सीजन एंड नाउ इज आपके जो ऑफ द बेंच पीपल आ रहे हैं, दे आर लाइक youngsters who are much more motivated, or plus एक skill factor is obvious. मतलब would you say your bench is a definite upgrade compared to previous years? डेफिनेटली अंकित भैया, अगर आप देख लो बेंच पे लास्ट सीजन ऑप्शन देखो, व्हेन वी हैड इंजरीज भाई कोई था ही नहीं हमारे पास लाने को. इस सीजन actually first team से we have not lost anybody. We have just added quality. We have added Saliba into our team. We have added Jesus. We have added Zinchenko. We have added, किसको मिस कर रहा हूँ मैं, Fabio Vieira. ठीक है, तो हमने बहुत क्वालिटी ऐड की है अपनी टीम में. एंड हमने एज सच फर्स्ट टीम से ना, जो हमारी टीम में मेन से तो कोई भी नहीं गया है. एंड एवरीबडी इज गेटिंग बेटर. मार्टिनेली भाई जिस हिसाब से स्टार्ट किया उसने, आप वो देख लो. ये सारी इंजरी है, तो ये सारा देखो वर्ल्ड कप के पहले, मतलब अभी जब तक वर्ल्ड कप तब तक तो ही आउट, प्रॉब्ली नहीं खेलेगा वो. उसके बाद ही विल बी बैक एज वेल. वी हैव ओडेगार्ड, वी हैव वेरा की बात कर ही ली हमने. अब टॉप देखो तो एंकेतिया भाई डस कम ऑन. लास्ट सीजन उसने आखिर में 5 या 6 गोल मारी दिए थे प्रेम में, तो दैट वाज वेरी रिस्पेक्टफुल नंबर जिस हिसाब से उस नंबर ऑफ मैचेस खेले थे. हीसूस का फॉर्म आप देख ही रहे हो, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं. और मार्किनियोस की बात कर लो भाई, क्या उसने खेला था यूरोपा लीग में. तो जो नए बंदे हम लाए भी हैं वो भी इंप्रेसिव हैं. हम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ मार्किनियोस आके प्रीमियर लीग में हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इन द यूरोपा लीग, इन द ग्रुप स्टेजेस, जब फिक्सचर कंजेशन इतना ज्यादा है, तो दीज बॉयज कैन कम इन एंड दीज बॉयज कैन डू अ वेरी गुड जॉब. या फेयर इनफ. लेकिन मैं एक और चीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है एंडी का. यस एब्सोल्युटली, हम बात करेंगे मिडवीक में उसके बारे में. एंडी, थैंक्स फॉर दैट. बट एवरीवन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, इफ एवरीवन कैन लाइक द स्ट्रीम, विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. लेट्स हैव मोर पीपल, बिकॉज़ लाइक आई से, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल सी, वेयर विल बी डिस्कसिंग ऑल द गेम्स एज वेल. दिस इज जस्ट अ सेकंड गेम, और वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अदर लीग्स भी. आई नो जहां पर थोड़े ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस आ रहे अबाउट रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड अदर थिंग्स, एंड डेफिनेटली भाई उत्कर्ष इज इन द हाउस, तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी. वी विल कम टू दैट. लेकिन फुल बैक सिचुएशन, और आई एम टॉकिंग अबाउट राइट फुल बैक, बेन वाइट. अब बेन वाइट, पीपल विल से भाई बंदा अनलकी था. हमने ही बात की थी, रिमेंबर नॉट बीइंग पिक्ड फॉर इंग्लैंड. लेकिन उत्कर्ष, टोमियासु नॉट बीइंग देयर नाउ, अब ये कोइंसिडेंस है नहीं कि आर्सेनल हैवंट केप्ट मेनी क्लीन शीट्स डिस्पाइट एक बहुत ही अच्छा काइंड ऑफ स्टार्ट. तो somewhere down the line would you have that a proper full back, क्योंकि यहाँ पर विंग प्लेज, जहाँ पर टॉटनम आर आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग, अगर पेरिसिच खेलता है, तो वुड यू नॉट प्रेफर टोमियासु? अंकित भैया, अब देखो मैं बताता हूँ इसका बेन वाइट का रीजन क्या है सीजन खेलने का. व्हेन टोमियासु कैन डू दैट रोल, अच्छा कर सकते हो. टोमियासु कुछ और भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ऑन द बॉल आई थिंक बेन वाइट इज बेटर. एंड जब हम बिल्डअप करते हैं ना, तो हम इन्वर्टेड फुल बैक्स के साथ खेल रहे हैं, और फुल बैक्स आर नॉट गोइंग वाइड. तो टोमियासु उस रोल में उतना अच्छा नहीं. आई थिंक बेन वाइट हैज प्लेड सीडीएम बिफोर, ही हैज प्लेड एज अ राइट सेंटर बैक, तो उसके पास वो एडेप्टनेस है टू प्ले एज अ इनसाइड फुल बैक. तो व्हेन वी बिल्ड अप, इट्स बेसिकली आप कह सकते हो जाका आपको दिख रहा है, ही प्लेस बेसिकली व्हेन यू आर अटैकिंग रोल, वो पैरेलल किट ओडेगार्ड के, ही इज एसेंशियली अ नंबर 10 व्हेन वी आर बिल्डिंग अप. उसके नंबर ऑफ असिस्ट और गोल देखो तो जस्टिफाई कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. पार्टी इज होल्डिंग दैट सीडीएम, 2 सेंटर बैक के आगे, एंड उसके बगल में हमारे 2 फुल बैक्स रहते हैं भाई. एक तरफ जिंचेंको रहता है एंड एक तरफ वाइट रहता है. तो वहां पे अगर आप, चलो मैं टियरनी तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता वो, मैं टोमियासु को डाल देता हूं वहां पे. तो टोमियासु मुझे लगता नहीं उतनी एडेप्टनेस से वो रोल कर सकता. अगर हम फुल बैक चाहिए अप एंड वाइट, अप एंड डाउन फ्लैंक करना, तो डेफिनेटली टोमियासु ऑप्शन है, वो हमने लास्ट सीजन देखा था. लेकिन अभी जो हम सिस्टम खेल रहे हैं, जो इन्वर्टेड फुल बैक्स के साथ खेल रहे हैं, उसमें बेन वाइट इज बेटर एज कंपेयर टू टोमियासु ऑन द बॉल. एंड डिफेंसिवली भी बेन वाइट के पास पेस है, और एरियली भी ठीक ही है वो. और उसकी क्रॉस फील्ड बॉल्स आप देख ही रहे हो, क्योंकि हम आप देखो जब हम बिल्डअप करते हैं ना, हीसूस काफी टाइम को लेफ्ट पे दिखेगा, बेन वाइट या फिर सलीबा में से समबडी स्विचेस द बॉल टू हिम. तो अगर बॉल स्विच करने की बात आई, तो मेरे ख्याल से बेन वाइट से बेहतर कोई है नहीं स्क्वाड में हमारे पास. पहले थैंक्स फॉर दिस राहुल, एंड ऑफ कोर्स भाई सब लोग हो जाए भाई. अगेन टारगेट इज नॉट मच, वी हैव 150 का टारगेट, लेट्स गेट टू द टारगेट ऑफ लाइक्स. लेकिन हाँ, अगेन यहाँ पर शाउट आउट देना नहीं भूला यार, कम ऑन भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेट्स फॉर 17 के. संडे लीग पंडिट्स बाई चांस नहीं किया, और यहाँ पर ऑफ ट्रैक हमें बात करनी है. हु एम आई यार, लोग पागल कर दिए मुझे, हु एम आई करो भाई. अचिंत सब लोग जानते हैं भाई बिजी है अभी, लेकिन होपफुली वील गेट टाइम एंड मैं एक बार अचिन से क्रॉस चेक कर लूंगा भी एक बार, क्योंकि अचिन का मसला ये है कि सबसे बड़ा दिक्कत टाइम गैप का है. एंड टाइम हम खुद लाइव डिफरेंस. अरे टाइम गैप बहुत बड़ा मसला है. बिल्कुल. और इनफैक्ट उत्कर्ष हिमसेल्फ इज वेटिंग यार. उत्कर्ष इज पोटेंशियल फाइनलिस्ट, यू नेवर नो. मैं क्वालीफाई करके हो गया मैं. हाँ, उत्कर्ष इज क्वालिफाइड. ओ भाई, मैंने कांग्रेचुलेशन मैसेज डाला राउंड था ऑफ भाई. अप्लॉज मेरे लिए उत्कर्ष भाई. मुझे नहीं पता था. उत्कर्ष हैज क्वालिफाइड एब्सोल्युटली यार, एंड डेफिनेटली दैट इज ऑन, दैट इज पेंडिंग. वही है, मतलब वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ अचिंत एंड विल गेट देयर, और गुरुजी भी. बिग अप अंकित भाई. अरे क्लब फुटबॉल फाइनली बैक टुमारो. चिन्मय बिग अप भाई. चिन्मय कल थे हम मैनचेस्टर के बारे में बात किए थे, मैनचेस्टर डर्बी भाई. क्विकली आई नो विल कम बैक टू द आर्सेनल टॉटनहम. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टॉटनहम फैन भी. क्या लगता है भाई मैनचेस्टर डर्बी, मतलब एरिक टेन हाग, हमने काफी बात की है लास्ट 1 महीने में, लेकिन उत्कर्ष मतलब जो रियली बिलीव कि जो
चेंज हुआ है एरिक टेन हाग का, दैट इज बिकॉज ऑफ मे बी एक लिसांड्रो मार्टिनेज काइंड ऑफ बैकिंग, और एट द सेम टाइम रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं किया है, मतलब इज दैट फॉर रियल? इस गेम में भी आई डोंट थिंक रोनाल्डो इज गोना स्टार्ट, क्योंकि अगेंस्ट सिटी द बेस्ट चांस ही इज गोना हैव इज ऑन द काउंटर्स। मतलब सबसे आसान तरीका क्या होता है, पुट अ पेसी मैन इन बिहाइंड एंड हिट द बॉल टू हिम, ठीक है, क्योंकि सिटी आपको मोमेंट्स मिलेंगे जहां सिटी भाई आप ऊपर होगी, सिटी का आपको पता बैकलाइन से सिट डाउन करके तो खेलती नहीं, देयर प्रीटी अप द पिच, तो आपको मोमेंट्स होंगे जहां रैशफोर्ड भाई कैन रन इन बिहाइंड, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रैशफोर्ड इन दिस वन। रोनाल्डो विल डेफिनेटली कम बैक इनटू द टीम, उसकी फिटनेस अभी नहीं आई है, ऐसा नहीं कोई कह रहा है कि रोनाल्डो खत्म हो चुका है, हमने इस पे काफी लंबी चौड़ी लाइव स्ट्रीम की भी थी, तो ऐसा कोई सीन नहीं, लेकिन इन दिस मैच आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रैशफोर्ड। एंड यूनाइटेड, यार मैं सही बताऊं, जितना भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा खेल लिया, आई डोंट थिंक दे हैव इनफ टू बीट सिटी। आई डोंट थिंक केविन डी ब्रुयने है, अर्लिंग हालैंड, फोर्डेन, बर्नार्डो, और मतलब द लिस्ट गोज ऑन, लिस्ट इज एंडलेस यहाँ पे। आई डोंट थिंक दे कैन स्टॉप सिटी फ्रॉम स्कोरिंग। अगर इफ दे डू तो दे हैव अ चांस ऑफ विनिंग, बट अभी तक कोई रोक नहीं पाया, एंड आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टॉप सिटी राइट नाउ फ्रॉम स्कोरिंग अ गोल। यूनाइटेड कैन स्कोर, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिटी को रोकना बहुत जरूरी होगा, और वो बहुत मुश्किल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। बाय द वे एंडी बोल रहे हैं, if Arsenal can't get top 4 would be the biggest bottling of after buying Premier League I winners don't think Jesus so. and Zinchenko। आई थिंक 6 गेम्स 7 गेम्स के बाद एंडी आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो, आई डोंट थिंक, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आर्सेनल हैज एक्चुअली नॉट डन दैट आफ्टर बीइंग टॉप एट क्रिसमस अ कपल ऑफ टाइम, मुझे याद है खुद, तो टेलिंग इट राइट नाउ विल बी अ बिट टू मच यार, मतलब अभी भी यू हैव टू से भाई आर्टेटा इज स्टिल लर्निंग ऑन द जॉब, ऐसे फाइनल मतलब ही इज नॉट द तैयार वाला मैनेजर नहीं है यार, मतलब मैं तो खुद आई एम एनवियस ऑफ आर्सेनल, मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ उत्कर्ष को, लेकिन फैक्ट इज ही इज बीन डूइंग गुड, लेकिन टू पुट दैट प्रेशर टू हिम इज आल्सो नॉट फेयर, सच में बोलूं तो। मैन यूनाइटेड यार प्रीमियर लीग मैनेजर द मंथ और प्लेयर ऑफ द मंथ मिल गया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्या ही तो बोले, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू आर्सेनल वाला मैच में ग्रैनिट जाका, लाइक ही इज अ मैन रीबॉर्न यार। आई नो कैप्टनसी एक मोमेंट था जहां पर इट वाज नॉट ग्रेट, लेकिन विद ओडेगार्ड कमिंग इन मे बी वही आर्सेनल को ऐसा कैप्टन चाहिए था जो मे बी इज डूइंग मोर ऑन द पिच रादर देन यू नो एज इन वो एक इतना आउटवर्डली कैरेक्टर नहीं था, तो ग्रैनिट जाका, मतलब आर यू रियली सीइंग ग्रैनिट जाका टू बीइंग मतलब एक प्रॉपर आर्सेनल का फल्क्रम फॉर अ बिग टाइम, लॉन्ग टाइम? अब अंकित भी उसको कॉन्ट्रैक्ट नया साइन किया है नहीं उसने, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहा है, डेफिनेटली आई थिंक वी विल गिव हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। एंड इंटरेस्टिंग, ग्रैंड जाका इज द वाइस कैप्टन, ओडेगार्ड के बाद जाका एंड हीसूस, दो ही हमारे बंदे वाइस कैप्टन है, तो जाका भी देखो आपको दिख भी जाएगा सीजन, आई थिंक जिसमें ओडेगार्ड नहीं था, तो इसमें ही लास्ट वाले मैच में आई थिंक ही वोर द आर्मबैंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, पूरे मैच को मुझे ध्यान नहीं है। एंड यहाँ पे आर्टेटा को भी क्रेडिट देना होगा, यहाँ पे जाका को भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि आर्टेटा हैज टुक आउट दैट साइड ऑफ हिम कि भाई अब तुम ये भी रोल कर सकते हो, ठीक है, इससे पहले किसी ने किया नहीं था उसके साथ, तो आपको आर्टेटा को क्रेडिट देना होगा। एंड जाका, क्योंकि आप एट दिस एज टू अडेप्ट योर गेम टू बेसिकली अ न्यू सिस्टम, फाइंडिंग इन पोजीशन जहां आप पहले नहीं पाते थे अपने आपको, एंड प्रोड्यूसिंग देयर, एंड खाली प्रोड्यूसिंग करना भाई, गजब खेल रहा है जाका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सही बता रहा हूँ, तो दी बेस्ट आर्सेनल मिडफील्डर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो लेकिन टेम्परामेंट देखिए जाका का, आई डोंट थिंक क्वालिटी इतना, मतलब आई नो ही प्रोबेबली अंडरवेल्म्ड, मुझे याद है अगेन गोइंग बैक इन आर्सेन वेंगर डेज भाई, कांटे यू हैड अ ऑप्शन, कांटे जाका, आपने मतलब यू वेंट फॉर जाका राइट, you were underwhelmed, लेकिन eventually भाई he has shown that on his day he has a great quality as well, लेकिन when it comes to big games temperament, अब अगर यही चीज मुझे लास्ट सीजन पूछते हो ना, मैं बोलता हूँ ग्रैनिट जाका लिख कर देख लो, फर्स्ट 20 मिनट्स में येलो कार्ड, नेक्स्ट हाफ एन आवर में एक और येलो कार्ड रेड कार्ड होगा, यू नो, अगेंस्ट टॉटनहम, दैट काइंड ऑफ थिंग, परसेंटेज बहुत हाई ये देता। दिक्कत तो है, ये तो दिक्कत तो लास्ट सीजन में हमने देखा था कि इन सिटी व्हाट हैपेंड, तो रैश टैकल तो है उसका उसमें अभी भी, लेकिन अब देखते हैं लिवरपूल के खिलाफ भी लास्ट सीजन भाई ही टुक अ रेड कार्ड, लेकिन वहां पे मैं उसकी गलती नहीं बोलूंगा, ही वाज द लास्ट मैन एंड ही वाज गोइंग फॉर द बॉल, एंड जाका शुडंट बी इन दैट पोजीशन, इट वाज अ सेंटर बैक पोजीशन, जाका अगर लास्ट मैन है तो डेफिनेटली दिस इज अ प्रॉब्लम विद डिफेंस, तो उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन रैश टैकल तो है उसमें, इस सीजन अभी तक तो नहीं किया है, होपफुली ना करे, ऑब्वियसली एज फैक्टर तो है नहीं, जाएगा कि इस 21 22 की सीख जाएगा, अब तो अब सीखने वाली उम्र गई नहीं है, नहीं भाई की, तो देखते हैं यार, बस यही कह सकते हैं कि अब उसको खुद ही समझना है, and it's not easy to take out that out of a game at the age of 30 मतलब जिस एज पे वो है, तो लेट्स सी, होपफुली बस फिंगर्स क्रॉस है जाका के साथ वो ना करे, क्योंकि अगर वो चला जाता है, क्योंकि पार्टी को फिर भी हम एलएनई भी इंजर्ड है वैसे भी, लेकिन वहां पे हम किसी को खिला सकते हैं, लेकिन वो जाका वाला रोल है ना, हमारे पास उस रोल को अभी रेप्लिकेट करने के लिए कोई बंदा नहीं है हमारे हिसाब से।
Yeah, but Andy, putting the main question, Ankit, would you take Jesus over Sterling? Yeah, I know a lot of people would. I wouldn't. मतलब 6 games हुए भाई, मतलब आप बहुत ज़्यादा. He's been brilliant, Jesus. Don't get me wrong. और of course, age is on his side compared to Sterling. और the guy is more creative. ऐसे नहीं बोलूँगा Sterling is the creative element. वो खुद के लिए create भी करता है, गोल्स भी करता है. Jesus उसको मौका ही नहीं दिया भाई. Man City, you can argue to play as a central striker a lot of times. मतलब he made him right winger. अच्छा किया था, लेकिन वही है. आर्सेनल में ही इज गेटिंग एक थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम और ही इज लुकिंग लाइक ही इज द मेन मैन इन दैट अटैक. लेकिन स्टर्लिंग भाई, पीपल हैव फॉरगॉटन इन दिस बैड रन ऑफ चेल्सी. मेरे ख्याल से स्टर्लिंग हैज रियली आउटशोन एवरीवन, क्योंकि डिस्पाइट नॉट प्लेइंग इन हिज प्रेफर्ड पोजीशन उसने मारे भाई इतने गोल्स. तो यू हैव टू गिव इट टू स्टर्लिंग बिल्कुल. तो ये बात तो है, स्टर्लिंग हैजंट बीन पुअर फॉर यू, ही हैज स्कोर्ड अ नंबर ऑफ गोल्स. अब ये वाली बात है, आप स्टर्लिंग का हमेशा आपको पता है ओवर क्रिटिसाइज होता है स्टर्लिंग, तो वो कोई डिनाई नहीं कर सकता. ठीक है, अभी आप नंबर्स देखोगे तो आपको जीसस अभी बेहतर लग रहा है. नहीं, अभी तक वो बेहतर रहा है, क्योंकि चेल्सी, आर्सेनल का ब्रांड ऑफ फुटबॉल, आर्सेनल जिस पोजीशन में, चेल्सी जिस पोजीशन में, मैनेजरियल चेंजेस तो दिख रहा है कि भाई कौन सी टीम बेटर फॉर्म में, तो एक प्लेयर के नंबर से बेटर होंगे. लेकिन जस्ट एट आप अब इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते. गिव हिम अ सीजन, गिव हिम अ सीजन और 2, उसके बाद फिर देखेंगे हु हैज बीन द बेटर साइनिंग. होपफुली इट्स जीसस. Yeah. अच्छा, by the way, I've just got a message from the Spurs fan भाई, वो join करने वाले 5 मिनट में, and I know that Utkarsh also has to go. So before actually Utkarsh goes, everyone let's get the predictions. Of course, it's the North London derby. मैं तो चाहता हूँ भाई I'm स्कोर not ड्रॉ हो predicting. जाए. मैं अपनी टीम में मैचेस प्रेडिक्ट नहीं करता हूं, तो मैं पहले चलो कहता भाई, हूं हम I'm not लोग predicting. चैट पे कर दीजिए. मैं अपना प्रेडिक्शन नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे. आर्सेनल स्पर्स है. यस, बाय द वे, स्पर्स जैसे मैंने बोला भाई, दे आर हैविंग अ मैच ऑन ट्यूसडे. तो मेरे ख्याल से देयर माइट बी सम रोटेशन, क्योंकि यस, रिचार्लिसन डिड वेल फॉर ब्राजील, लेकिन रिचार्लिसन का ट्रैवल ज्यादा हुआ है. तो मुझे लगता है, अगेन फॉर एफपीएल एक्सपर्ट भाई, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता रिचार्लिसन माइट एक्चुअली स्टार्ट दिस गेम. आई फील दैट थोड़ा रोटेशन होगा डिस्पाइट द फॉर्म, और सॉन फॉर्म में आ गए. हाँ, कॉन्टे जोक कर रहे थे दैट ही माइट एक्चुअली कीप सॉन ऑन द बेंच कंसीडरिंग वो परफॉर्मेंस ऑलवेज. लेकिन होने नहीं वाला. लेकिन तो इसलिए मैं जा रहा हूँ. यस, आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ. जस्ट लाइक मैनचेस्टर डर्बी मैं देखता था भाई, मैन सिटी आर वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा, फर्स्ट और थर्ड है. तो इसलिए आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ. और 2-2 ड्रॉ वापस से चेल्सी का जो हुआ था स्पर्स के साथ विद ड्रामा, वो इज समथिंग दैट आई एम प्रेडिक्टिंग. देयर विल बी सम ड्रामा 100%. मैं बोल रहा हूँ ग्रैनिट जाका, एज मच एज उत्कर्ष चाहेंगे नहीं भाई, आई एम सीइंग ग्रैनिट जाका. अभी तक बहुत साउंड रहे. आई थिंक सम एक मोमेंट आएगा जाका का, ही माइट जस्ट गिव अवे दैट लीड ओवर द रेड कार्ड. आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग इट. लेकिन आर्सेनल विन बोल रहे जस्ट Hopefully it's वाला not. इंटरेस्टिंग. 2-1. तो भाई आर्सेनल वाला गेम अभी डिस्कस करें. we'll talk again a little bit more with the Spurs fan as well. Okay, I think we've had Eugene joining. Okay, Eugene is actually on the way but is joined. Big up to Eugene भाई, join कर लेते हैं. तो before Utkarsh goes as well, Eugene, how are you? Able to hear me fine? Yeah, can you guys hear me? Oh yeah, just Yes, about, we can just hear you. about. Perfect, Perfect. perfect. So, by the way, people, Eugene is a huge Spurs fan. He's a Spurs ultra. As in, probably from the time मैंने football देखना शुरू नहीं किया था, from that time Eugene has probably been a Spurs ultra. So imagine that, and he knows his stuff inside out. Whole of Malaysia knows it. I'm sure whole of Southeast Asia knows. But people, shout out first to even not only Sunday League Pundit but even Spursvision TV. The both tagged below. So before Utkarsh goes as well, Eugene, you have a proper derby going on in my stream right now. But I asked a question to Utkarsh about Son being on form and the fact that you have a game on Tuesday. Do you see Richarlison being rested considering he's traveled with the Brazil team, etc.? And that Tuesday game is a must-win for you. It's an away game to Frankfurt again, right? Yep. For me, it's a tell truth, right? Like I was saying in yesterday's show and one of the other fan shows. At the moment now, I'm not too, how you say it, looking on to the lineups and all that. Who's really injured? Who's really going to be starting? There was a rumor earlier that Deki, right, was injured and he wouldn't be playing. But it's hard to say about Son and all that. If Deki is really injured, then I guess Conte will have to use Richarlison no matter what, right? But of course, Richarlison's traveling, But he was in Paris. The last game they played Tunisia, he was really in Paris. So he wasn't in South America or anything like that. So yeah, but he's going through a lot, right? In terms of as in he has a mentality, I know, but as in with the banana being thrown, etc. So I'm guessing that I honestly I'm not going to go into that racism thing, right? Yeah. Because if you're going to go into that, right, the whole world is racist. Honestly, right? We are a bit racist ourselves too sometimes. To be honest, right? But to tell the truth, I think that will spur him more.
I think Richarlison's character, right? He's the guy. You must see his life story, how he became a footballer, where the diversity that he had to go through, right? It wasn't given to him on a silver platter. He had to work from it. He came from the slums, right? And he goes back. He's got a big heart. So what I feel is whatever is being thrown at him now, right? He will take it and he will turn it into something that he will give him inspiration to show the world that he's much better, right? But coming down to the NLD, for us is that we haven't won there in 12 years, guys. We haven't won there. And every time is that I've been saying it in the shows, we have a deal with Arsenal, is that we'll lose at your place and you'll come and lose at our place and we'll share the 3 points. All right? We'll share the 3 points. Yeah. Interesting. But, Okay. By the way, Eugene, sorry to cut you. When everyone here, everyone by chance again, shout out to Sunday League Pundits. I know Utkarsh आपको जाना है भाई. Again, I wanted to speak Barca with Utkarsh, but कोई नहीं. Utkarsh, hopefully we'll get you on Save it for some other day. Exactly. Lot of discussions left. तो भाई सब लोग उत्कर्ष को जाना है. तो big up to Sunday League Pundits and Utkarsh, all the best to get a draw. ये मैं बोल रहा हूँ. No, we're gonna win this one. We're gonna win this one. Take care, boys. Bye bye. Okay, but we have Eugene still. So Utkarsh, see you soon. चलो भाई उत्कर्ष तो है. तो shout out बनता है. Let me give a couple of shout outs. Eugene, are you driving or what? of course, I'm driving. I just finished work. Man, as in, come on, drive safe, bro. As in, it's okay if you can join me a couple, later if you don't want to be driving. No, and you must understand. I'm in the Spurs community. I'm famous for this, right? Okay, the only time I know time that. to stream, right? Apart from being at home, right, is when I drive to work and drive back home from work, right? So, but nowadays I'm quite slow. I don't go that fast anymore. So that's why if I drive home, I have about half an hour. Live Okay, on interesting. stream, so, Interesting. Nice of you to say that. And again, shout out to TCSB as well. So I know again injuries. I think already Eugene has said about Kulusevski, and of course, Loris also. I believe he did not start for France, right? That's the concern for me because Arsenal, as much as they are conceding, they are scoring a lot of goals as well. So, as in, are you convinced with Foster starting in case Loris is not fit? In this case, right, of course, with Loris not around, there's a slight doubt there, right? But of course, with Foster, last season he did quite well against Arsenal too. But it gives him a chance, right, to prove himself, to be in, to step up, to take over when Loris is not around. So because don't forget, I don't think he will be the permanent replacement for Loris. All right. Yeah, he's just that's for there, sure. That's for sure. Yeah, it's a stopgap thing for him. But even being a stopgap, maybe if he does well, right, when Loris next year, I think he's going to retire. And then when the next goalkeeper comes in, he still can be number 2 for us then, right? So but for all you know that, we're not that sure what kind of injury Hugo has, right? So I'll say let's wait and see, because Conte during his press conference he did say this, right? I'm not going to reveal who is injured and who's not injured, right? Yeah, that's there about Conte, and in fact, Conte is one of them. Or यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं सब लोग, for Conte, one thing has been consistent, he does throw in that surprise in terms of injuries and suddenly, like a Jose used to do at times as well, that you see those, players actually being fit. So you never know with him. I have to say that's why for FPL managers you have to be careful about picking Tottenham players. I have a lot of them. I picked Emerson Royal, bro, and he didn't pick him last week. So are you going with Sessegnon and Perisic, or you would go with Emerson and Perisic? To tell you the truth, right? Somehow or another, Conte has got the confidence in Royal, right? He has said that he's improved, right, since he's taken over, since Nuno's time. And somehow or another, the only game that we didn't see Royal start was actually during the Leicester game. Eugene, are you in a tunnel? Are you in a tunnel? No, I'm just going through a dark area. Right? Oh, okay. No wonder. Street lights there. You'll see some car lights behind me soon, right? But what I'm saying is that whatever Conte does, right? I think, a coach or a manager which is much more, the caliber is higher than Arteta. That's all. That's how I believe it, right? So, but he lets out little secrets or little innuendos that that stirs Arteta up, right?
Now Arteta is Yeah. like thinking, who's injured? Right? How am I going to play my formation? Right? Am I going to force Partey back into this game? Right? Tierney's out. What am I going to do on the left wing? What am I going to do on the right wing? Right? So I guess in the end of the day, that's what Conte is doing to Arteta. He's giving him mental problems Yeah. even before the Okay. game starts. I know. Right? I know. I don't want to be So, taking but of too course, long of like you're talking about Royale, Eugene. right? Mm-hmm. My biggest Yeah. my biggest fear. Okay. I think there's a network issue at Eugene's end. Eugene, I think the data is not great right now. Internet connection problems, slightly jittery. Just hold on. It happens. It happens. No problem. No problem. So Eugene, you know what? I actually let you go. Hopefully, I'll let you go because I don't want to be kind of being the Yeah, person I'm back who and be forth. Yeah, I think it's better now. Yeah, it's better now. Yeah, it's got back to normal. not really. Again, आप लोग बोलिए अगर आप लोग को clear लग रहा है. But again, Eugene, before you go, I want to ask you this question about Harry Kane. Again, I know that the Alan Shearer record is there, but now that Haaland is scoring so many goals, as in you're better off not having these rumors year in year out, or you're like, no, Harry Kane is our man. And where are you standing on Harry Kane? Bayern Munich really want him, Right. right? Okay, to tell the truth, like, let's do the maths, right? If Yeah. Haaland scores about average 30 goals a season, right, to beat Mm-hmm. Shearer's record, he will have to do it in how many seasons? Let's say 5 is 150 goals, 6 seasons, right? 6 seasons to Yeah. actually beat Alan Shearer's record, 189, to catch up to the 189. Let's say about average about 6.5 seasons, or maybe he's doing 35 a season, right? Unless he scores 60 a season, right, in the Premier League, right, then he'll catch up with Shearer in 3 years. But that will give at least Kane another 2-3 years to catch up to Shearer. Even so, if there's another big if how you said Haaland stays in Manchester City that long. For all you know, Haaland will stay in Manchester City for another 3 years, right? Real Madrid comes along and says slap a 200 million euro price, we'll Mm-hmm. take you, and he'll be gone. That's how I see it. And he might not even be chasing after how you say it, what called Shearer's Record. record. Yeah, Yeah, yeah. but As in yeah, but that's actually a yeah, point. So Kane has a good chance of getting it and staying put. Simply put. So yeah, simply. yeah, Put. But again, Eugene, great to have you. I know that again. I want you to drive safe, bro. And again, yeah, we yeah. are going to move on with Thanks other for having games me as well. on. Thanks for having me on. Yeah, Yeah. But thanks for before having you me on. go, I'm sure you make predictions. Do you? So I want a prediction from you and who scores as well. Everyone in the For chat. me, I think to me, right, to think about formation, to think about how we're gonna play. If we play Conte ball, we'll be sitting back, absorb all the pressure, and of course attack on the counter, right? If Son and Kane, I mean not even Son and Kane. Let's say if Son has actually regained his form, right, the counter attack will be very effective, right? But if Son is still a bit lagging behind, from the jet lag coming back from Korea or Asia and all that, then there's another little iffy side of it, which I see, He right? did score though. He did score. I Yeah, he must say that scored a free kick, and of there as course, well. there's the Mm. free kick story about why isn't Son on free kicks, but why Harry Kane is on, right? And then he scored a header. That's one of Son's. We never see Son score from a header, but he scored a header in Asia. But what I see is that deep down inside, right, we never do well in Emirates somehow or another. Whether we're gonna win, if we get a score draw, I will actually take the draw, right? I actually would predict a 2-2 at the moment. Maybe a brace from Son, or maybe one from Son and one from Kane. And to tell the truth, we don't even know what's the situation with Deki, right? I'll be happy with a 2-2. And of course, come on, you Spurs, and Levy out. Okay, so yeah, great to have you again. Big up to Eugene, of course, and all the best. And of course, we'll meet again soon. And again, people, shout out to Spurs Vision TV. Yes, I, as a Chelsea fan, I'm saying to go and subscribe to a Spurs channel. That's actually real because you know this stuff as well as the panel there. So see you soon, and drive safe. Take care. Yeah, take care. Thanks for having me Okay. on. Yeah, sure. Thanks again. And yes, people, हमने continue करना है because there are a lot of other games as well. So we have Farhan saying Kane opening goal and Son hat-trick again, भाई.
काफी बात कर ली है हमने नॉर्थ लंदन डर्बी की, एंड ऑफ कोर्स चेल्सी के टॉक्स विल कम बैक, लेकिन आई नो दैट देयर वर लिवरपूल फैंस इन द हाउस एंड देयर आर फैंस इन द हाउस जो बाकी लीग से भी है। तो सब लोग पहले तो यार अगेन लेट मी नॉट अगेन आस्क इट, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, ये लाइक्स जो है ना वही चैनल को आगे चलाते, वही स्ट्रीम्स को आगे चलाते। तो लाइक्स कर दिया दीजिए कीजिए। और अगेन फॉर पीपल जो मिस किए थे, वी आर कमिंग अप विद अ लॉट मेनी शॉर्टर वीडियोस एज वेल, तो सब लोग वो भी देख रहे हो होपफुली ऑन बोथ द चैनल्स, बिकॉज इट्स अ क्रेजी वर्ल्ड कप ईयर, नॉट जस्ट फुटबॉल जो इस चैनल में, बट ऑल्सो ऑन फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। तो सब लोग हो जाए। ऋषि बोल रहे हैं मॉड बनेंगे भाई, let's see, I'll probably make you more Rishi in some time, लेकिन again try and be a little bit more consistent Rishi, definitely हम बनाएंगे, मुझे याद रहेगा बात। thanks Rishi for offering that, it'll be great to have more mods, absolutely। लेकिन moving on, yes मैंने भी टूल किया है विद जाका रेड कार्ड, मैंने तो प्रेडिक्ट किया है, लेकिन आई एम सेइंग दैट लिवरपूल वर्सेस I think they are playing Brighton. Yes, Liverpool Brighton. Bhai, this will be an interesting game. For people who remember Brighton के मैनेजर आए हैं चेल्सी में, और ब्राइटन में एक वॉइड क्रिएट हो गया था, वहां पर दे आर हैविंग अ न्यू मैनेजर इन प्लेस, रोबर्टो डी जर्बी, राइट, वो एक नए मैनेजर आए हैं। तो नया मैनेजर सिंड्रोम और एक बाउंस होगा ब्राइटन का। दे आर प्लेइंग अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन एनफील्ड में। व्हाट डू यू थिंक वहां पर क्या होने वाला है? बिकॉज लिवरपूल के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है, yes, even as opposition fans, I have to say it's good news for them, and that is that first of all, I think Van Dijk has looked a little bit better इंटरनेशनल ब्रेक में, तो आई हैव टू गिव यू दैट। लेकिन लिवरपूल फैंस, यू हैव डियोगो जोटा, एज मच एज पोर्चुगल काफी हगी थी इन दैट मैच अगेंस्ट स्पेन, हम सब जानते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन आई थिंक जोटा वाज प्रोबब्ली द ब्राइट स्पॉट वहां के मैच से। और डियोगो जोटा कमिंग बैक फिट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट देता है विद लुइस डियाज ऑलरेडी बीइंग देयर। तो ईदर विंग में यू कैन हैव एक अलग एलिमेंट, और जोटा also he'll kind of replace Salah के साथ, sometimes Salah comes center, Jota will go right, etc. तो वहां पर ज्यादा flowing football मिलेगा for Liverpool। And most importantly, Thiago select नहीं हुए थे for Spain because he was not 100% fit, I believe उस समय जब selection हुए थे, and now he's fit, तो Thiago in midfield आ जाएंगे। लेकिन big question यही है, Henderson by he has not been in form, he's been selected for England I believe more or less, लेकिन I don't think Henderson is in form। So Liverpool fans, anyone in the house or neutrals even, you say, would you actually see a Henderson being there, or would you say nahi, it's probably going to be a Harvey Elliott who probably is going to take that spot? Or yes, Trent का has been trending the news कि वो नहीं है इंग्लैंड स्क्वाड में अभी के लिए, looks like वो वर्ल्ड कप भी शायद नहीं जाए, लेकिन it's again a blessing in disguise for Liverpool। तो all these factors taken into consideration, Shimikas has been doing well। I feel despite the new manager bounce, Liverpool will get the better of Brighton। हाँ, ब्राइटन दे हैव अ वेलबैक जो एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड है, थोड़ा सा एलिमेंट रहेगा वहां पर प्लेइंग अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन फिर भी मुझे लगता है लिवरपूल एट एनफील्ड विल बी टू स्ट्रांग। और आफ्टर दिस ब्रेक, जो लंबा ब्रेक मिला लिवरपूल लाइक अ चेल्सी, आई थिंक दे विल बी रेडी। तो मैं बोलता हूँ लिवरपूल विल बी स्कोरिंग 2 goals टू ब्राइटन 0, 2-0 मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए सब लोग। LM10 भाई, थैंक्स much love to you for joining as always, and of course okay, thanks Rishi, 2 likes to go, come on bro, let's get to 150 likes भाई, like target ऊपर कर देते हैं so that you can see that absolutely। या गौरव, मैंने काफी बोला इसके बारे में यार, मैंने एक शॉर्ट्स भी रिलीज किया है इस स्ट्रीम के बिगिनिंग में भी हमने डिस्कस किया है, तो विल कम बैक टू इट आफ्टर विल प्रेडिक्ट द अदर गेम्स, ठीक है, टू बी फेयर टू अदर फैंस एज वेल, नहीं चलो बिग अप, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एज वेल। एंड यस, मैंने चेल्सी के बारे में पूरा बोल दिया, बट विल कम बैक टू दैट एज मच एज टाइम मिले। विल डेफिनेटली वॉच ब्राइटन गेम फॉर गिलमोर एंड कॉलविल। हाँ, दिस इज अ पॉइंट, स्पेशली चेल्सी फैंस, फेयर इनफ। लिवरपूल 3-1 बोल रहे ऋषि, इंटरेस्टिंग अगेन। मैं देख रहा हूँ भाई ब्राइटन, काफी लोग बोल रहे हैं आफ्टर पॉटर गोइंग ब्राइटन विल नॉट बी द टीम, लेकिन आई फील दैट न्यू मैनेजर बाउंस है, प्लस द फैक्ट दैट प्लेयर्स तो यार काफी उन्होंने सेल नहीं किए, तो आई फील दैट ब्राइटन विल स्टिल बी गुड, दे विल बी ब्राइट। लेकिन हाँ, लिवरपूल एट एनफील्ड डिफिकल्ट है। ये मेरा कॉल है, आप लोग बोलिए व्हाट इज योर कॉल। लेकिन अगेन आई नो हमने मैनचेस्टर डर्बी कल डिस्कस किया था ऑन डिफरेंट स्ट्रीम फॉर पीपल मैडम मिस्टेड, हम आएंगे वापस इफ टाइम परमिट, सेम विद पैलेस वर्सेस चेल्सी स्ट्रीम के बिगिनिंग में किया है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द नॉर्थ लंदन डर्बी और अब लिवरपूल ब्राइटन कर लिया है। लेकिन हाँ, we'll come back to the Premier League क्योंकि there are other games elsewhere। भाई इंटर वर्सेस रोमा,
यस, अगेन बार्सिलोना रियल मैड्रिड के भी बात करेंगे हम, एब्सोल्युटली एटलेटिको मैड्रिड का इंपॉर्टेंट है, बायर्न म्यूनिख का आज एक इंपॉर्टेंट गेम है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्विकली इंटर रोमा की बात करनी पड़ेगी भाई। सेरिया हैज बीन क्रेजी। आप बोल सकते हो नापोली हैज बीन द फॉर्म टीम, ठीक है, इंटर हग रही है, प्रॉपर हग रही है, तो चेल्सी फैन जानता है भाई, लेकिन मिड वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है इंटर मिलान के लिए। इंटर मिलान का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक, यस इट्स एट होम टू बार्सिलोना। तो भाई बार्सिलोना के साथ है, वो भी ट्यूसडे नाइट को है। तो कंसिडरिंग वो ट्यूसडे नाइट को है, आई हैव अ फीलिंग दैट दे माइट जस्ट रोटेट इंटर मिलान। हाँ, दे आर प्लेइंग रोमा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, डिस्पाइट रोमा इजी नहीं ले सकते, यस रोमा भी इतना अच्छा शुरू नहीं किया एमएस से ओवरऑल, लेकिन उनके इंजरीज है कंपैरेटिवली, आई नो वाइनाल्डम एंड द लाइक्स है, काफी इंजर्ड है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर एक मिडफील्ड रोटेशन कर सकते हैं, बिकॉज इंटर लास्ट आई थिंक 6-7 मैचेस में रोमा के साथ हारी नहीं है। तो वहां पर मैं देख रहा हूँ इंटर विल डू वेरी वेल कंपेयर टू बेसिकली यू नो व्हाट दे हैव डन रिसेंटली, माय ओपिनियन। एक कॉन्फिडेंस आता है, प्लस एक और मैं क्यों लिखा हूं, बिग डार्बीज गैलोर। आप लोग बोल रहे हैं इंटर रोमा को कब से डार्बी हो गया। मैं जैसे चेल्सी पैलेस के बारे में बोला था ना, लॉफ्टस चीक है वहां पर, गैलेगर है, यहाँ पर हु हैव प्लेड फॉर द ऑपोजिशन अर्लियर, यहाँ पर यू हैव आई थिंक मैकेटेरियन खेले हैं रोमा के लिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एवरीवन, और जेको भी खेले हैं, यस लकाका इज नॉट 100% फिट अभी तक, लकाका फिटनेस इज अ मेजर इश्यू इंटर में, लेकिन यू हैव टू गिव टू एडन जेको जो अच्छा किए इन माय ओपिनियन, ही हैज बीन द लोन ब्राइट स्पॉट अलोंग विद मे बी अ डमफ्रीज और यू नो कपल ऑफ अदर्स। इसलिए मैं देखता हूं विद दैट एक रोमा एलिमेंट है, एक्स प्लेयर्स है वहां से, प्लस एक रोमा के साथ अच्छा रिकॉर्ड है, और ट्यूसडे मैच है, आई एम सीइंग देम। किसी ने देखा एक बंदा है इंटर का ऑन लोन फ्रॉम एम्पली, क्रिश्चियन असलानी। तो आई एम गेसिंग क्रिश्चियन असलानी, ही इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, ही माइट एक्चुअली प्ले। क्रिश्चियन असलानी, अगेन स्काउट्स यार गौर रखिए, this is something that you might want to watch out for. Christian Aslani is on loan from Empoli to Inter Milan. I think मैं expect करूंगा इनको शुरू करते हुए because of the Tuesday match. But again, apart from that, I don't see ज्यादा changes Inter में. Yes, Robin Gosens hasn't been a player, लेकिन I think Inter Milan, I remember Conte के अंडर एरिक्सन को chances ही नहीं दिया था भाई Conte ने. तो at some point, Robin Gosens deserves a few more chances. फिर उनको थोड़ा momentum मिलेगा. So I'm guessing that Robin Gosens will continue and ज्यादा rotation कर नहीं पाएंगे because उनकी squad thin है. तो I am going with basically in Inter Milan victory. Yes, I'm going Roma. Unfortunately, will not come up trumps against Inter Milan away मेरे ख्याल से, और Inter Milan victory मिलेगा because मुझे नहीं लगता बार्सिलोना के साथ कुछ करने वाला है midweek में. Let's be very honest. Handanovic is the captain, is the goalkeeper. For me, they'll continue, but I'm seeing that Inter Milan might just actually take this game. थोड़ा ऑड गोल वाला फैक्टर रहेगा, 2-1 मैं बोलता हूँ, दोनों का डिफेंस हैज नॉट बीन ग्रेट, लेकिन मैं बोलता हूँ 2-1 टू इंटर मिलान, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग देखते हैं। अच्छा, आईसीसी 2 ड्रॉ, ये लिवरपूल वाले गेम का बोल रहे तन्मय, लिवरपूल 2-1 टू ब्राइटन, वर्जिल वैन डाइक, ट्रेंट एंड इवन नूनेज हैव अ पॉइंट टू प्रूव, दैट्स अ गुड पॉइंट। इंटर इज बैड, यस वही है, इट्स हाई टाइम दैट इंटर परफॉर्म, नहीं सिमोने इंजागी, ही हैज बीन काइंड ऑफ लिविंग ऑन इंटर्स लॉरेल्स मोर देन हिज। अरे बिग अप टू लू मैन, कैसे हो भाई, ऑलवेज नाइस टू सी यू, एंड अगेन लेट्स गेट द लाइक्स ऑफ पीपल। लुकाकू हैट्रिक विद बारसा, मोस्टली नहीं खेलने वाला है, एट द ऑन द बेंच रहेगा एट बेस्ट रतन में। अगेन हमने बात करना है, कोई नहीं, जस्ट वाला थैंक्स फॉर बीइंग देयर, नो प्रॉब्लम, ऑल चेल्सी फैंस अंडर प्रेशर नो डाउट, वेल when are we not under pressure? Let's put it that way. When are we not under pressure? But Luman and everyone, I hope you checked out my shots. There is reason to be happy and believe in Chelsea because we are making big moves in the transfer market, even when the transfer market is not open, and even director of football is not. Yes, exactly. This is also true about Lakaka. He might miss that match as well. So again, for me, Inter will be a big match for them. अगर बाई चांस, अगेन आप लोग बोलिए, देयर वाज अ क्वेश्चन, लेट मी गेट अप द क्वेश्चन। यहाँ पर आई थिंक अंश ने पूछा था क्या, सॉरी फरहान ने पूछा था भाई, यस बाय द वे मैंने कुछ कमेंट्स नहीं लिया है, आई हैव स्टार्टेड, आई विल टेक इट बिफोर एंडिंग द स्ट्रीम होपफुली इफ आई हैव टाइम, क्योंकि यार वही है, वी ट्राई टू स्टिक टू द टॉपिक जब आप बात करें, इतने सारे मैचेस इन द वीकेंड, फुटबॉल कमिंग बैक एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन हाँ, व्हिच क्लब मैनेजर वुड बी सैक्ड बिफोर द वर्ल्ड कप, ये है व्हिच क्लब मैनेजर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फरहान का। आप लोग बोले चैट में, फॉर यू व्हिच इज दैट? For me, I think Simeone Inzaghi is probably right up there. देखिए, आप इंटर बोल सकते पैसे नहीं थे and all that, but the fact is they did not sell the main center back. ठीक है, स्क्रीनियर वहीं पर है, तो वहां पर मैं मुझे दिख रहा है कि यार they might have to do something more.
नहीं तो दे आर गॉन इन द सेरिया रेस. सेरिया रेस में इट्स बिन नापोली एंड मिलान एंड ऑफ कोर्स भाई couple of other teams. We talk about Bologna, they are also doing well. लेकिन उडिनेजी दे आर डूइंग वेल. लेकिन आई मस्ट से दैट इंटर मिलान विल बी आउट ऑफ द रेस और भाई टॉप 4 में से भी बाहर हो सकते हैं. इसलिए मैं बोलता हूँ as much as you would say that it is one of the Premier League managers, bhai, I think Simeone is right up there because yes, they don't have money. Inter शायद sack करेंगे, लेकिन भाई let's be honest, with all due respect to Inter Milan, they can get a manager by not paying their money as well. That's what it is. Okay, Tuchel to Inter Milan should happen. Oh, this actually, I know Tuchel to Juventus काफी चल रहा था, हम Juventus की बात करेंगे quickly, but I actually feel that this can be a reality. The reason मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि आई थिंक आप देखिए कॉन्टे जैसे छोड़े थे इंटर मिलान इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले, आई डोंट थिंक सिमियोने हैज चेंज सो मच. और टुकल अगेन कमिंग फ्रॉम चेल्सी, द वे ही प्लेड, आई डोंट थिंक इट्स सो डिफरेंट. तो वहां पर मैं देख सकता हूं. लेकिन अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है टुकल का प्रेफरेंस रहेगा से बायर्न म्यूनिख अगर अवेलेबल होता है जॉब. लेट्स बी ऑनेस्ट. Barcelona gonna have a tough month with all those injuries to key players. Yes, absolutely. तो चलो भाई next let's move on to Barcelona. भाई Barcelona again, Farhan, everyone in the house. Anyway, let's get the likes in. Let's get more people. मुझे पता है that I saw a picture. वो picture कितना सही है गलत आप बोल लीजिए. Barcelona fans especially. I saw a picture जहाँ पर Jules Koundé was actually training. तो Jules Koundé might actually be fit. नहीं, Jules Koundé might actually be fit. यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रहे थे इन द लास्ट 72 आवर्स. लेकिन अराहो डेफिनेटली आउट मैन. अराहो बैड लक यार. मतलब आई पर्सनली फॉर पीपल जो देखते हैं भाई दोनों ही चैनल्स, स्पेशली ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, इवन ऑन फीफा हम जो खेलते हैं, अराहो फॉर मी इज ऑलवेज बीन अ टारगेट कि भाई ये आ जाए चेल्सी पे, बढ़िया प्लेयर है भाई. नहीं आने वाला है वो अलग बात है, लेकिन मैं सब बोल रहा हूँ. ठीक है, तो अराहो इज अ ह्यूज मिस ऑफ कोर्स इवन फॉर द यूरुग्वेन नेशनल टीम. लेकिन for Barcelona, I think it'll be more of a miss than even say his national team. Ankit is always even a Tuchel fan. Yeah, same thing. I'm a Mourinho. मैं criticize करता हूँ, but that doesn't mean I'm a fan. Absolutely. हाँ, लेकिन come on, I hope it doesn't go to a direct rival. That's all I'm saying. West Ham चावल के लिए कितना मांगेंगी? Well, that is a possibility. But again, talking about Barcelona quickly. देखिए दे हैव मयोर्का के साथ खेल रहे, जहां तक मुझे पता है. हाँ भाई मयोर्का के साथ खेल रहे अवे, एंड बार्सिलोना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है मिडवीक में. तो यू कैन से दैट डिफिकल्ट है सिचुएशन बहुत कि इंटर मिलान दे हैव टू ट्रैवल. हाँ, इंटर मिलान हैव बीन बैड फॉर्म, लेकिन इंटर मिलान जो की थी लिवरपूल में अवे लास्ट सीजन, तो सब लोग भूल नहीं सकते वो परफॉर्मेंस. एंड बिकॉज ऑफ दैट बार्सिलोना माइट एक्चुअली बी फोर्स टू रोटेट यहाँ पर. हाँ, मयोर्का अवे है और दे कैन नॉट इवन अफोर्ड अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि द रीजन बीइंग बाय रियल मैड्रिड हैज बीन सो गुड. मतलब इतना फ्लॉलेस रही ना रियल मैड्रिड की, यू विल से दैट बार्सिलोना दे हैव टू गो फॉर 3 पॉइंट्स इन एवरी गेम इन ला लीगा. लेकिन वही है, इंटर मिलान के साथ है, दे डोंट वांट अ सिचुएशन जहां पर दे विल बी थर्ड इन द ग्रुप एट ऑल, स्पेशली आफ्टर लूजिंग टू बायर्न म्यूनिख. तो इसीलिए मुझे लगता है there actually might be more rotation than even usual despite injuries, क्योंकि यार लोग आए हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद में. lot of Barcelona players have been traveling as well. याद रखिए रफीनिया बहुत अच्छे फॉर्म में है, he'll probably start as well. लेकिन again at the end of the day they will be rotating. तो भाई everyone Barcelona fans, आप लोग बोलिए what is your starting 11 for the match against Mallorca, or let us get the predictions. I still feel the Barcelona without say Araujo will still be good enough. Yes, they might be missing. De Jong might not be able to start this game. Jules Koundé might not be able to start. लेकिन भाई मुझे लगता है बेंच पर रहेंगे. And of course there will be say couple of other जो ifs and buts है, they will miss. Like Depay वो तो ऐसे भी स्टार्ट नहीं करते, तो वहां पर एक इश्यू है. लेकिन am I missing someone? I don't think so. I think Dembele का थोड़ा सा न्यूज आता है. Dembele का किसी को पता है क्या एग्जैक्ट न्यूज है? Again I am seeing that अगर Dembele नहीं भी होते ना, they have a Fati, they have a Rafinha. तो भाई क्यों नहीं? They will just continue with Fati and Rafinha. Torres for me in that first game against Switzerland, he looked a little bit better compared to recent weeks. तो they have a variety of options. यहाँ पर कमी नहीं है बार्सिलोना के लिए. डिफेंस में है तो वहां पर अगेन एरिक गार्सिया है, पीके क्रिस्टियनसन probably they might have to start as an again right back. Bellerin I heard is also injured. तो अगर वो फिट इनफ नहीं है, मे बी डेनमार्क के लिए जो किया है एट वेरी वेरी फ्यू टाइम्स, आई डोंट नो, मे बी क्रिस्टियन एरिक सॉरी
Christensen playing right back, or maybe go with a 3 at the back system. वो मैं देखता हूँ. Dembele is fit, it was precautionary. चलो, तो that's good news. So again, seeing this, or Rafinha traveling, maybe Dembele शुरू करेंगे, add that maybe a wing back kind of a role, and they might go 3 at the back क्योंकि they don't have right backs available for this match. नहीं, I think if Barca gets to Europa, Xavi will be sacked. Well, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब आई डोंट थिंक इट बी sacked फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषि, लेकिन हाँ, ये मेरा पॉइंट है दैट फॉर देम इट्स इंपेरेटिव कि भाई बायर्न के साथ दे काइंड ऑफ go head to head in that Champions League group. They want to be first ideally. आज बायर्न हारा तो श्योर Nagelsmann gonna sack. Okay, that is interesting. That is interesting. Yes, by the way, यहाँ पर मैं दिखाने चाहूंगा why are people saying that. भाई everyone, Mallorca versus Barcelona हो जाए in the chat. Let us know what are your predictions, especially Barca fans अगर है तो. लेकिन हाँ, let's talk about today's fixture. Yes, आज 12 बजे रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम the match is starting, इसलिए हम अभी उसके बात करें. भाई बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरकुसन. तो this is extremely important. Let me tell you, यहाँ पर मैंने टेबल दिखाना है. टॉक अबाउट ला लीगा, dominated by Real Madrid for a time being, और Barcelona is very close of course. लेकिन in terms of Bundesliga, Serie A is बहुत ही competitive. Bundesliga काफी competitive हो गई भाई all of a sudden. It is actually the case. पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, I hope दिख रहा होगा. I think it's big enough. चलो, तो Union Berlin on top, Borussia Dortmund second, Freiburg third, Hoffenheim fourth, Bayern Munich fifth. Oh my God, Bayer Leverkusen लेकिन किधर है? That's the main point. Bayer Leverkusen खेल रहे at home at Bayern Munich. They are not doing well. तो yes, especially Chelsea fans आप Bayer Leverkusen को देखना चाहेंगे because of Callum Hudson-Odoi. I know that. So that might be one of the factors. I'm pretty sure on that. लेकिन what do you all think? Bayern Munich versus Bayer Leverkusen. Yes, again, Germany not having great results. और काफी सारे प्लेयर्स है जर्मनी के इन द बायर्न म्यूनिख स्क्वाड. लेकिन अगेन दे प्लेइंग एट होम, मैं जाऊंगा बायर्न म्यूनिख कम बैक, और बायर्न म्यूनिख एज मच एज अभी तक नहीं है. नैगल्समैन रहेंगे जॉब में, क्योंकि यार देखिए, यस फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल विन, लेकिन अगर बाय चांस ड्रॉ हो जाता है, जस्ट हाइपोथेटिकली लेट्स से अबाउट इट, आई स्टिल फील विल बी देयर बिकॉज मतलब फॉर मी एज मच एज यू वुड से दैट बायर्न म्यूनिख को जीतना है बुंडेसलीगा, और वो एसेंशियल है, इतने सालों से होते चला आ रहा है. बट like say a PSG, like say even a Man City, yes, Farmers League, whatever, सच है, वो जज किए जाएंगे अपने चैंपियंस लीग एक्सपर्ट्स पे. ये मेरा सच मानना है, और अभी तक टेक्निकली इज डन वेल. तो एक टेस्ट मिला, ही पास द टेस्ट, तो दैट इज द ओनली रीजन. हाँ, बट हारेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है. ओ यस तन्मय, बिल्कुल यार, काफी बिल्डअप करना है उस समय. डेम्बेले, चलो ये तो कर लिया था. बार्सा का इंटर का अगेंस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली, आई थिंक वही है, इधर वे इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इंटर और बार्सा दोनों की बात की है. एब्सोल्युटली. व्हाट इज द टेबल? एग्जैक्टली, दैट वाज एक्चुअली द बुंडेसलीगा टेबल. ट्रस्ट मी, इट वाज द बुंडेसलीगा टेबल. आई नो पीपल वर नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन वो रियलिटी है. तो भाई बायर्न म्यूनिख, बायर लेवरकुसन एंड मायोर्का बार्सिलोना, क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा? लेट मी नो इन द चैट. अगेन, I would still go with Bayern Munich and Barcelona, despite basically the changes जो हम देखेंगे because of midweek games. हाँ, Bayern Munich का against Victoria Pleasant है, तो वहां पर maybe they'll not make as many changes versus maybe a Barcelona generally for their weekend games ना. लेकिन हाँ, इंटर में they might rotate as well, क्योंकि इंटर बार्सिलोना एक दूसरे के साथ खेल रही है. तो ये था मेरा यूरोपियन का थोड़ा सा एक जल्दी सा एक प्रीव्यू. ठीक है, तो कमिंग बैक टू द प्रीमियर लीग बिफोर वी एंड एज वेल, there are other games as well, everyone. और by the way, यहाँ पर shout out to all the members, especially bro, every person, the members, community especially, shout out है, because we are having the prediction league back. भूलिएगा मत, मैंने एक मैसेज डालना है in the community for the members first thing in the morning, or you can also reply to this particular stream with all the predictions of the Premier League. हमने 10 fixtures select करने हैं. Apart from that, I think all 10 fixtures है, तो इस बार you can just go for with your score predictions, everyone, all the 10 fixtures. ठीक है, Ankit bhai, every club is playing 13 games in next 43 days. That is a game in every 3 days. Will this be a deciding month? Absolutely, Rishi, this is the deciding month. You can say that this month, मैं बोलता हूँ ये month और जनवरी, क्योंकि जनवरी होगा जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप. इट डिपेंड्स ऑन कितने लोग आएंगे आफ्टर इंजरी, हु विल बी द वर्ल्ड कप हाइप्ड प्लेयर्स एंड ऑल दैट. एक फॉर्म विल बी आउट ऑफ द विंडो, और उस समय लॉट ऑफ गेम्स आर देयर एज वेल. तो मैं बोलता हूँ भाई, अक्टूबर एंड जनवरी are the most crucial months in the entire season, मैं बोलता हूँ, especially in the Premier League, if not even for other leagues, क्योंकि यार वर्ल्ड कप तो सब लोग के लिए, राइट? तो अगेन याद रखिए, अक्टूबर और जनवरी. इन अदर लीग्स आई वुड से अक्टूबर एंड फरवरी, दैट्स व्हाट आई वुड से एब्सोल्युटली. लेकिन यार
उनको रोटेशन करना पड़ेगा. यस 5 सब्स्टिट्यूशंस है इंटायर यूरोप में अभी, लेकिन जो स्क्वाड बेटर है ना, इसीलिए हम बोलते आ रहे, there are certain issues with certain squads compared to maybe the top notch teams. वहां पर मुझे लगता है squad rotation is a real thing इस बार. नहीं यार नहीं, I don't think so. Costa, yes they need a striker. Come on भाई, एक महीना I don't think so. Yes again वर्ल्ड कप भी एक महीना का है, 1.5 महीनों का है, लेकिन I would not say that Costa will be there. That's my honest opinion. But again आप लोग बोलिए, what do you all think about it? Again let me see. I think Nottingham will not relegate. चलो थोड़ा उन टीम्स के बारे में बात कर लेते हैं. ज़ेन, थैंक्स फॉर अगेन बीइंग देयर, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन देयर. भाई हमने, for people who missed out, we have discussed North London derby, we have discussed Palace versus Chelsea, we have discussed Liverpool versus Brighton, of course. Lekin, of course, there is another game that you can say that okay, this is extremely important. और मैं यहाँ Premier League table दिखाता हूँ, and the reason I'm doing that is because it's early days. लेकिन it's काफी pressurizing, especially when it comes to managerial kind of statuses in Premier League, right? तो things can happen within एक week. भाई आपको sack मिल जाएगी what not. तो यहाँ पे नीचे कौन है? लेस्टर, नॉटिंघम, वेस्ट हैम, वुल्व्स, क्रिस्टल पैलेस, एस्टन विला. यस मैं जोड़ रहा हूँ. साउथहैम्पटन भी, चलो उनको भी जोड़ लेते हैं. एवर्टन तो है ही, खैर हमें पता है. लैम्पार्ड हेटर्स आर इनफ, लेकिन कोई नहीं. अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ ही इज ग्रेट, बट डेफिनेटली ही इज देयर इन द रेलेगेशन फाइट अभी के लिए. यस नील मोपेज एक फैक्टर उनके लिए जो एडिशन है, एंड ऑफ कोर्स उनका जो ओनाना मिडफील्डर है, इन माय ओपिनियन भाई वॉच आउट फॉर हिम. फॉर द पीपल आउट देयर, स्पेशली एफपीएल एक्सपर्ट्स, भाई ओनाना आप देखिए, ओनाना फॉर एवर्टन एंड लीड्स खैर ऊपर है ना. लीड्स के नॉन्टो मैं तो बोलते आ रहा हूँ काफी स्ट्रीम से. दीज आर कपल ऑफ प्लेयर्स जो आपको एक डिफरेंशियल देंगे जो पीपल माइट नॉट बी नोइंग मच अबाउट. ठीक है, लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ फॉर लेस्टर. ठीक है, लेस्टर के लिए आई डोंट नो व्हाट टू से. आई वुड से दैट लेस्टर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेस्टर आर प्लेइंग नॉटिंघम फॉरेस्ट. तो अगेन इट इज अ 6 पॉइंटर. अगर लेस्टर बेसिकली इस मैच में भी नहीं करती है, आई एम कन्विंस्ड कि लेस्टर रेलेगेट हो रही है. यस सॉरी लेस्टर फैंस, अगर ये मैच में भी नहीं करती, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट जितनी चेंज कहीं देखा नहीं है भाई हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में. मैंने तो इतना ज्यादा चेंज हुआ है उनके पर्सनल में, एंड दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ लेस्टर माइट जस्ट एक्चुअली रेलेगेट अगर वो मैच हारती है. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, द फैक्ट इज लेस्टर के लिए अभी फोकस कर सकते हैं कंटिन्यूसली इन द प्रीमियर लीग. और आई फील दैट एक एकजुट होती है जो टीम लेस्टर, दैट काइंड ऑफ टीम, आई फील दैट लेस्टर एक्चुअली विल गेट द बेटर ऑफ नॉटिंघम फॉरेस्ट. मुझे लगता है नॉटिंघम फॉरेस्ट आर एब्सोल्यूट फेवरेट्स फॉर रेलेगेशन. ठीक है, और बाकी मैच आप लोग बोले क्या लगता है आप लोग को, और प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं आपका लेस्टर नॉटिंघम फॉरेस्ट. आई एम गोइंग फॉर अ लेस्टर victory by the odd goal. I'm going for a high scoring one. 3-2 हो जाए भाई, 3-2. Madison in form, absolutely right. अरे ये अच्छा क्वेश्चन है भाई मुदित का. ऑफ टॉपिक बट टॉप 3 वर्स्ट ट्रांसफर्स ऑफ ऑल टाइम. ओके ओके, वर्स्ट ट्रांसफर्स ऑफ ऑल टाइम, इंटरेस्टिंग. मतलब आई हैव टू से, अगेन पीपल माइट डिसएग्री, लेकिन कंसीडरिंग आप वर्स्ट कब बोलते हो, व्हेन यू हैव पेड सो मच मनी और एकदम ही भाई हगा है बंदे ने, एटलीस्ट फॉर दैट क्लब जिसके लिए आपने साइन किया है. तो फॉर मी, एज मच एज द गाय इज गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग, वी आर टॉकिंग अबाउट, उससे बात करने वाले एस्टन विला के, आई थिंक इट्स गॉट टू बी वन ऑफ देम हैज टू बी फिलिप कुटिन्यो फॉर बार्सिलोना. लिवरपूल मेड लॉट ऑफ मनी, लेकिन बार्सिलोना व्हाट डिड दे गेट आउट ऑफ फिलिप कुटिन्यो? यस, बायर्न म्यूनिख के साथ उन्होंने जीता. आई एम नॉट टॉकिंग फिलिप कुटिन्यो एज अ प्लेयर उस समय में, बिकॉज ऑन लोन ही वन द चैंपियंस लीग. लेकिन विद बार्सिलोना, व्हाट बार्सिलोना एक्सपेक्टेड वर्सेस जो उन्होंने पे किया था वो फिलिप कुटिन्यो, आई थिंक आई हैव टू पुट इट देयर, राइट अप देयर, डेफिनेटली. एज मच एज आई हेट टू से इट, द रियलिटी इज चेल्सी ट्रांसफर्स आर डेफिनेटली राइट अप देयर, राइट अप देयर. आई कैन नॉट नेम चेल्सी भाई. वर्स्ट ट्रांसफर्स ऑफ ऑल टाइम आप लोग भी बताइए अपना. लुकाकू has to be one of the worst transfers. Yes, you might think मैं Torres बोलता, लेकिन again Fernando Torres has given a lot to Chelsea. Of course, no one can forget talking about Barcelona, that goal in the semi-finals against Barcelona. But not just that, 2013-14 season में Europa League उन्होंने जिताया था, in my opinion, Fernando Torres that is. So for me, Lukaku has done shit. He's done shit. That's what he's done. So Lukaku has to be there. Another third one आप लोग का देख रहा हूँ, आप लोग को देखते हैं. Before I pick my third, let me see. ओके, यहाँ प्रथम पहले बोल रहे हैं. प्रथम, बिग अप भाई, कैसे हो? ऑलवेज गुड टू सी प्रथम इन द चैट. मैनेजर लाइक पॉटर इज परफेक्ट फॉर लेस्टर एंड रॉजर्स फॉर चेल्सी. ओह माय गॉड. एलेक्सिस सैंचेज, या दिस इज अ गुड वन. लेकिन एलेक्सिस सैंचेज के लिए
Was it not a swap? Was it not a swap? I'm talking about value for money wala. That's the only reason. Uh, Pogba is a shout, absolutely. Griezmann, yeah, Griezmann for Barcelona, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, to be honest. Griezmann has to be there, yeah. Griezmann has to be there. I thought, yeah. Maguire, by Maguire, na, as much as you would say it's one of the worst as well. There have been seasons under Ole जब मुझे याद है लैम्पार्ड वाले सीजन में मगवायर वाज वेरी गुड, आई नो दैट. तो आई थिंक जो डिफेंसिव एलिमेंट था इन दो डिफिकल्ट सीजन्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, मगवायर एंड डेविड डिया ने काइंड ऑफ सेव दैट बैकलाइन. वो हुआ है एक दो सीजन्स के लिए, बस बोल रहा हूँ, नॉट मोर. ऑफ कोर्स मैं तो बोलता हूँ भाई मगवायर इज हैज बीन ओवररेटेड. अभी यार कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपन, गोइंग द अदर साइड दैट्स व्हाट आई फील. डी मरिया, ओके. वैन बिसाका, आई डोंट थिंक ऑल टाइम में बोलूंगा भाई प्रथम. ग्रिलिश नॉट येट, गिव इट टाइम. मैं बोलता हूँ फरहान, अभी हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है. लुकाकू वन क्लब वर्ल्ड कप, 2 इंपॉर्टेंट गोल्स. रियली तन्मय, कम ऑन, वी शुड हैव वन दैट मैच एनीवे. हाँ चलो, आई गिव इन द क्रेडिट, थैंक्स फॉर दैट यार. बट ओवरऑल मैं बोलूंगा पैकेज भाई, हमने जो पे किया था, स्पेशली बाइंग हिम बैक. रिमेंबर वी बॉट हिम बैक भाई. 2 स्टिंट्स हुए चेल्सी में, हगा है. फर्स्ट स्टिंट में भी यू कैन, हाँ बोलोगे बहुत ही हार्श हो रहे भाई अंकित. The fact is, he missed that penalty in the Super Cup. I cannot forget that. Yes, it was unfair कि भाई उनको दिया गया penalty, but he missed that, right? So you can also say that, Tanmay. But much love to you. Michael Owen, I disagree, bro. I have a strong opinion. Michael Owen was actually very good for Real Madrid. He had an impact. मैंने live देखा था almost every match, bro. I'm telling you. I don't know if you watched. Big respect to you. लेकिन मुझे लगता है Michael Owen to Real Madrid, if that's what you're saying, was actually good. In my opinion, he is, yeah, I'm not saying brilliant, लेकिन he was actually decent. Of course, आप expect ज़्यादा करोगे, लेकिन come on, did he get even enough starts? I don't think so. Pogba is right up there. Why did players like Coutinho and Griezmann fail at Barcelona? Well, to be very honest, देखिए आप बार्सिलोना का the kind of people who have actually succeeded in recent times have, or rather history में भी देखिए यार, it is very rare that Barcelona pays huge for a player and it succeeds. Even at Chelsea, I would like to say. So Barcelona with La Masia, they have that understanding, a chemistry, and new person coming in for them to kind of gel. It takes time. Barcelona, like say Real Madrid, a Chelsea, a Manchester United, Man City in modern times, there is a lot of pressure भाई, week in week out, और इसीलिए they are not able to gel. और Griezmann का मैं बोलता हूँ, कुटिन्यो का वो होगा फैक्टर. Griezmann का factor was that I don't think Griezmann को खेला गया था in his preferred position, because at that point, yes, the GOAT Messi, absolutely great, लेकिन भाई I believe with Messi and Griezmann being there at the same time in Barcelona most of the times, यहाँ पर Griezmann could not get the best. ये मेरा थॉट है. अगेन बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर कर दिया भाई, कोई भी डगमगा जाएगा इतना सैलरी ऑफर करने के बाद, कोई नहीं. ड्रिंक वाटर, या ड्रिंक वाटर हैज टू बी देयर, लेकिन वही हमने डिड वी पे a lot in today's day and age. आप नहीं बोलोगे yes, but it's a lot of money भाई. कितना 35 पे किया था हमने. रिवाज बहुत अच्छा पॉइंट है. वही चेल्सी फैंस डेफिनेटली. सैंटियागो म्यूनेज इन द हाउस, नाइस टू सी यू. Maguire, AWB, Fred, Luke Shaw, sell them all. Lukaku for United and Chelsea will come to the 1 and 2 from top 2 worst. Oh my god. Bilkul Soham. That's a interesting comment. FIFA 23 purchase channel, I want to see do an ultimate team. Oh yeah, bhai, again people go for super chats, both the super chats will go for FIFA 23. क्या बोलते हो? और when it's on sale we'll be going, लेकिन definitely हम करेंगे. It's a matter of time. FIFA 22 भी हम काफी खेल रहे हैं, but that's something that is pending as well. Beckham to AC Milan, Farhan, I disagree there. देखिए, first of all, it was not when Beckham was in his prime, ठीक है. Secondly, Beckham actually was I would say a dogged midfielder थे, who used to do a lot of dirty work which people actually miss out on. I felt that he did that for Milan. I really felt that. Yeah, fair enough. Wouldn't Lukaku under Potter would flourish at Chelsea? Imagine it turned Welbeck so much better. No. I don't think so. Yeah, even a Potter wants his striker to move, bro. He cannot move for fun. He cannot move. Trust me. I would not agree that he does. And more importantly, भाई आपने डिसग्रेस किया है क्लब को, लेकिन हाँ, if Potter wants him, so we have to accept. I don't think he will. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. Hazard for Madrid, yeah, this is arguable, लेकिन वही है. Just like a Grealish, jury's out. हाँ बोलोगे come on bro, come on, अभी क्या बोल रहे हो jury's out. लेकिन let's get real. Hazard, especially when Benzema is not there and maybe another player is not there, maybe he gets a chance and he flourishes. एक chance है फिर भी.
तो इसलिए मैं हजार्ड को नहीं बोला मिलान, लेकिन दैट्स अ नाइस वन एब्सोल्युटली भाई. लेट्स मूव ऑन. एंड यस, बाय द वे देयर आर अदर गेम्स एज वेल एवरीवन. यस, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ गेम्स. फुलम न्यूकासल, लाइक फ्रॉम द अदर गेम्स कौन सा गेम होगा जो आप लोग देखना चाहोगे? मतलब देयर इज फुलम न्यूकासल, there is Southampton Everton, or again talking about teams which are favorite for relegation, Southampton Everton, वो एक 6 पॉइंट है, तो do not miss that one. और मैं बोलता हूँ वहां पर Southampton Everton have got एक Iwobi factor जो people are not talking about much. Yes, I'm talking about Iwobi. Gordon has come out and said during the break कि नहीं भाई मुझे Everton में ही रहना है. He is a decent player. You have Neil Maupay joining, तो मुझे लगता है with Calvert Lewin getting fitter by the day, आई थिंक एवर्टन विल जस्ट अबाउट बी फाइन. लेकिन इस मैच के लिए इज इट टू अर्ली? क्योंकि आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक एवर्टन के लिए यू माइट फील दैट ओके एवर्टन माइट हैव हैड मोर इंटरनेशनल्स दैन साउथहैम्पटन. लेकिन मुझे लगता है साउथहैम्पटन एवर्टन, इट्स एट साउथहैम्पटन, तो आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ इन दिस वन. साउथहैम्पटन एवर्टन, एवरीवन इन द चैट आप लोग बोलिए क्या लगता है. फुलम न्यूकासल, Fulham, they have been brilliant. Yeah, there have been reports about Mitrovic. Now again, Mitrovic का पता नहीं क्या बोलोगे. I feel that Mitrovic might actually be playing this game as per the report जो मैंने पढ़ा है. Fulham have looked brilliant, लेकिन Newcastle उनको टाइम आ गया यार to step up the gear. मतलब as much as it's kind of harsh, I think Newcastle have also been unlucky at times. I think they deserved more up until now जो performance रहे हैं. तो यू कैन आर्ग्यू दैट यहाँ पर एक पोटेंशियल अपसेट है. यस, अपसेट मैं बोल रहा हूँ कि फुलम एक्चुअली लूजिंग कंसिडरिंग जो फॉर्म रहा है फुलम का. दे आर इन द टॉप 6 ऑफ द टेबल भाई, मतलब बिग 6 में एक्चुअली जुड़ गए एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 गेम्स. लेकिन आई एम गोइंग विद न्यूकासल यहाँ पे. आई थिंक न्यूकासल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Isaac might be playing. Let me just check. Okay, Isaac might not be playing. Looks like it. He picked up a muscle injury. Okay, Isaac picked up muscle injury on international duty with Sweden. That's not good. लेकिन I think Callum Wilson is fit. So that's good news for Newcastle. So I'm going for a high scoring match यहाँ पे. I'm going for a 3-2 victory to Fulham. Newcastle away. That's what I'm going with. Which Chelsea player injury would worry if you God forbid it happens? मैन अभी के लिए नो इंजरीज, प्लीज नो इंजरीज ब्रो, नो इंजरीज एट ऑल. देखिए फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर चेल्सी इन टर्म्स ऑफ चेल्सी टिकिंग क्लियरली फॉर मी इज दैट मिडफील्ड. आई थिंक जब मिडफील्ड सही खेलती ना चेल्सी की, सच में वी काइंड ऑफ डू बेटर इन गेम्स. यस, यू कैन से दैट हम ना जो डिफेंसिव फॉर्मेशन चैंपियंस लीग रन दैट वाज ब्रिलियंट, बट आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडफील्ड. इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर मी दैट Kovacic and Kante. For me, one guy has to be fit. अगर दोनों अनफिट होते, वी आर ऑलमोस्ट सेइंग भाई वो मैच हार रहे अपन या अपने ड्रॉ करना है. फॉर मी Kovacic, Kante, दोनों में से एक जन फिट होने ही चाहिए. दैट इज माय थिंग. ओके, फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पॉटर इज अपग्रेड ओवर टूकल. या लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भाई टाइम विल टेल ना. अब वो उन्होंने किया नहीं बिग क्लब में, दैट जुरी इज आउट थोड़ा सा अभी भी. तो आई विल नॉट से दैट 100% वो ट्रू है, लेकिन यू नेवर नो. बट चलो लेट मी टेक अ फ्यू मोर कमेंट्स. यहाँ पे शायद बोल रहे थे भाई, शायद कहाँ गया आप भाई? लिवरपूल फैन, कोई नहीं, बिग अप टू शायद. ओनली नाबी केटा, Curtis Jones and Alex Oxlade-Chamberlain are injury remaining whole. Liverpool team is back. Like I said, it is coming at the right time यार आपके लिए. यहाँ पे नॉर्थर्न अभी के लिए एंडी नहीं बोलता आर्सेनल हैव मैसिव एडवांटेज बिकॉज़ आर्सेनल प्लेयर्स आर रेस्टेड फॉर 2 वीक्स. ये हमने ले लिया था शायद. Arteta would be mourning if 5 to 6 players went to play for national team and injured. Arsenal win against Tottenham. अब चाहे वो कैसे भी आए, बस जीतेगा तो आर्सेनल ही. ओके, इंटरेस्टिंग. टॉड बर्ली told he wants Premier League All-Star versus Bundesliga All-Star. ओके भाई, इसके लिए क्या बोलते हो? अलग से वीडियो हो जाए? क्या बोलते हैं? ऑल स्टार देखना चाहेंगे आप लोग? मेरा ऑल स्टार पिक आप लोग भी बता सकते हो कमेंट्स में. लेकिन ऑल स्टार, प्रीमियर लीग ऑल स्टार कौन रहेगा, बुंडेसलीगा ऑल स्टार, ला लीगा ऑल स्टार में कौन जाएंगे, ये मेरे लिए एक अलग स्ट्रीम और अलग वीडियो हो जाए. और अगेन मेंबर्स, रिमेंबर देयर इज मेंबरशिप ओपन, और मेंबर्स के लिए स्पेशली वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ मेंबर्स ओनली स्ट्रीम एज वेल वेरी सून. और आप लोग बताइए, डू यू वांट हु एम आई और डू यू वांट वन ऑफ दिस पिकिंग द 11th वाला स्ट्रीम. दैट्स समथिंग दैट वी कैन डू. ओके, ये अंश आई नो दैट आपने कमेंट किया था काफी. ये भाई कैंसेलो टू रियल मैड्रिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है. मैं नहीं बोलना नहीं हो रहा. यस, इट माइट एक्चुअली हैपन बिकॉज अगेन इज पोर्चुगीज. अब देखिए पोर्चुगीज, आइबेरियन पेनिनसुला, बर्नार्डो सिल्वा, इट्स नो सीक्रेट वो जाना चाहते हैं बार्सिलोना एट सम पॉइंट. यस, ही लव्स मैन सिटी. आई एम नॉट सेइंग ही हेट्स इट. सेम थिंग कैंसेलो का. लेकिन विद पोर्चुगीज प्लेयर्स, विद स्पेनिश प्लेयर्स, यू नो दैट there is a connection when it comes to Real Madrid, Barcelona much more. So at some point it is bound to happen.
ये लगता है मुझे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. यार देखिए, इन द नेक्स्ट 2 years मैं नहीं देखता हूँ. आई एम प्रोबेबली सीइंग, बिकॉज अभी भी याद रखिए, दे हैव अ कार्वाहाल हु इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, फिटर एंड फिटर, और दे हैव बेसिकली अलाबा, रूडिगर लेफ्ट बैक भी एट टाइम्स, एज वेल एज ऑब्वियसली मेंडी. तो मुझे लगता है नेक्स्ट 1.5 सालों के लिए तो नहीं, मे बी आफ्टर मे बी 1.5 years ही माइट एक्चुअली मूव ऑन. सो वहां पर आई विल रेट हिम मे बी 6 out of 10, लेकिन अभी के लिए आई वुड प्रॉब्ली गिव हिम 2 out of 10 फॉर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैन सिटी का अभी चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ अबाउट विनिंग द चैंपियंस लीग. यस रिवाज, इंकुकू के बारे में भी हमने बात किया काफी ड्यूरिंग द स्ट्रीम एज वेल एज. मैंने एक शॉर्ट्स रिलीज किया भाई. पीपल लेट मी नो अगर आपको शॉर्ट्स दिख नहीं रहे मुझे यार, एंड अगेन हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन. लेकिन हाँ, आई एम रिलीजिंग शॉर्ट्स ऑन बोथ द चैनल्स एज वेल एज शॉर्टर वीडियोस भी प्लान है. तो भाई एवरीवन, लेट्स यू नो गिव इन सम फीडबैक वहां पर. और हाँ, लाइक्स दबा दीजिए कहीं भी जा रहे हो तो, इंक्लूडिंग द स्ट्रीम. देखिए, इंकुंकू का ऐसा है दैट he will be definite upgrade to a winner. मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई he is going to be a winner, but there is एक पॉइंट कि भाई उन्होंने पीएसजी में जो कुछ कुछ उखाड़ा नहीं था, ठीक है. he did all he did at Leipzig, yes, Bundesliga player of the year and all those things. अगर वो इस साल भी करते हैं that crazy run again, I would say it's a wow signing अगर होती है तो. अगर इस साल it's a so kind of performance, especially when it comes to the bigger games in Europe, I would have my jury out. Simple as that. लेकिन अभी के लिए I'm very very excited, और लोग जानते हैं because especially if they see my season on Almighty Sports Plus FIFA. I fear that Nottingham Forest is going to be the next yo-yo club. Okay. Silva to Barca. Cancelo Real City selling club थोड़ी है भाई. अरे अननोन भाई, दोनों तो देखिए, दोनों अगर होता भी है ना, देखिए सिटी, आई हैव टू एडमिट कि भाई काफी अच्छी स्काउटिंग हुई इन द लास्ट से 24 months ऑफ सिटी. अल्वारेज इज कम, ठीक है. फोर्डन विल बी द नेक्स्ट लेवल बाय से बी एंड ऑफ द सीजन. एंड ऑफ कोर्स फुल बैक इज एन इश्यू, आई अंडरस्टैंड वहां पर. तो मे बी इसलिए मैं बोला ना, कैंसेलो अभी के लिए तो नहीं जाने वाला नेक्स्ट 1.5 सालों के लिए. बर्नार्डो सिल्वा माइट लीव बिफोर कैंसेलो, पुट इट दैट वे. देखते हैं भाई, शायद बताते हैं, हम बात करते हैं एब्सोल्युटली. यस, बाय द वे, पीपल हु डू नॉट नो, पीपल, आईएसएल इज आल्सो इन हाउस. आप लोग बोलिए आईएसएल कंटेंट वी डू कवर एज मच एज पॉसिबल, विल बी ग्रेट. अगेन बेंगलुरु के लिए ऑलवेज सपोर्टिंग ब्रो. यार ईटीएच के लिए आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट, अगेन आई डोंट थिंक ही हैज अचीव्ड ऑलरेडी, इट्स टू अर्ली मटाटा यूनाइटेड, बिग लव टू यू. लेकिन यार ये मैं जरूर बोलूंगा अबाउट ईटीएच, द वे ही प्लेड फुटबॉल, और एक डच एलिमेंट होता है, ब्रैश होते हैं, दे काइंड ऑफ डोंट केयर अबाउट व्हाट दे स्पीक समटाइम्स, यू नो, मोस्ट ऑफ देम, आई कैन नॉट जनरलाइज, लेकिन मोस्ट ऑफ देम. तो फॉर मी आई सॉ दैट यस ही कुड डू दैट, लेकिन ही नीडेड टाइम, ही नीड्स टाइम. अभी भी मैं बोलता हूँ इट्स टू अर्ली टू जज राइट नाउ. आई वुड से दैट, yeah, I would admit that ETH to Man United looks like a better marriage than a Potter to Chelsea, क्योंकि Potter है Chelsea jury is out totally मेरे लिए. सच में बोलता हूँ, मे बी वही है, मेरा प्यार for Tuchel is more, and yes, definitely I'm excited to see Potter football. Potter ball मैं देखने को तैयार हूँ absolutely, और I want them to do well. But I'm just saying that big squad has he kind of managed? Ten Hag, at least he's been at Ajax. Ajax is still a big club, bro. It's a big club. That's the only difference that I'd say. जर्मनी स्क्वाड रिव्यू अगेन. तनिष्क, हम वर्ल्ड कप के रिव्यू शुरू कर रहे हैं भाई. अगेन लाइक आई प्रॉमिस्ड, यस आई प्रॉमिस दिस वीक, लेकिन अगर इस वीकेंड नहीं होता है तो विल स्टार्ट यू नो बाय मिड वीक एज वेल. तनिष्क, वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग लिटिल बाय लिटिल, लेकिन अगेन हम उसके लिए अलग स्ट्रीम करेंगे, अलग वीडियोस निकालेंगे. एंड डेफिनेटली हम शॉर्ट्स ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं तनिष्क. इफ यू सी, वी हैव स्टार्टेड वर्ल्ड कप फैक्ट्स के बढ़िया शॉर्ट्स. एंड यस, काफी दिन हो गया भाई, तो डू चेक इट आउट एब्सोल्युटली. हमने शॉर्ट्स का प्लेलिस्ट देखी है. ये मैंने बता दी ऑलरेडी. फॉर मी इट्स लियाओ, बट एंकुंकू बेटर फिट फॉर चेल्सी एंड पॉटर इन माय ओपिनियन. Okay, chalo, let's have that. Again, I personally feel that Syed, it might be difficult considering the amount of football. Lekin, let's see, we'll have a chat as well. Lekin I would love to. As United fan, I fear Potter. And by the way, not just football, cricket bhi bhai on Almighty Sports Plus. It's crazy season abhi. As United fan, I fear Potter. Interesting that. Can Real Madrid play 100 million release clause for Erling? I don't think so. They will. I genuinely don't really believe वो होगा. I believe it's more about Erling Haaland wanting to go. Yes, Man City, bhai, as much as you would say, come on, who would say no to Real Madrid? But Man City are creating madness bhi abhi. तो अभी, you know, picture abhi baki hai, like I always say. So technically you aren't backing Potter, yeah? No, I'm backing. I want him to do well. I'm just saying that
fitment for the club, fitment for how the club has been run, how the football is, about basically what they've managed, what kind of level they've managed. This is my prediction more than basically what I want. Obviously, I'm backing Potter. No two ways about it, bro. I know there's a banter there, funny one, but कोई नहीं. Oh my god, yeah, I get you, Pratham. देखिए, Nkunku will probably be better off in a counter-attacking side. He'll be better off जहाँ पर sides don't kind of have much possession. Maybe like a Warner, but only reason being मैंने बोला है Nkunku will still be a much but better success. क्योंकि Nkunku can play different positions और he is again young, he can be molded. और उनको actually हमने देखा ही नहीं. तो to be fair to him, we have not seen him in other kind of bigger sides really. तो PSG में he was not really starter anyway that time. तो थोड़ा सा unfair रहेगा on him, right? Just saying. बिल्कुल बिल्कुल शायद Haaland went to City just to get a move to Real Madrid. Remember Benzema ain't getting any younger and they can't keep playing Rodrigo as a false nine. Yeah, लेकिन immediately will they sign Haaland? I feel there'll be a stopgap. I don't think immediately होने वाला Haaland. That's my gut feeling. Nothing against Real Madrid or Haaland or anything like that. मैं सिर्फ gut feel बोल रहा हूँ. But come on, bro. And then we have discussed so much of football. By the way, talking about Real Madrid, उनका मैच है against Osasuna. तो अगेन मिडवीक गेम्स है इन द चैंपियंस लीग, जो हम एक स्पेशल पैनल आने वाले मंडे को, सो पीपल डू नॉट फॉरगेट दैट. लेकिन आप लोग ये भी बोलिए भाई, वॉच अलोंग, आर यू इन फॉर वॉच अलोंग, आर यू इन फॉर प्री मैच चैट, बताइए चैट में. वी कैन प्लान दैट एज वेल टुमारो. एंड ऑफ कोर्स मेंबर्स, मैं आपको अलग से मैसेज करता हूँ टुमारो डे टाइम. आई एम प्लानिंग ईदर टू डू एफपीएस स्ट्रीम फॉर एवरीवन और maybe do a members only stream. आप लोग बताइए based on your availability, we can do Who Am I, because जो Who Am I का सीरीज है उसमें we don't have अचिंत available for this week. तो वी आर काइंड ऑफ एनीवे पेंडिंग है, तो वो कर सकते हैं. नहीं तो हम डिस्कॉर्ड में कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन कितने लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें. द लिंक इज बिलो. वी कैन डू एनीथिंग व्हाट यू ऑल वांट टुमारो डे टाइम एज वेल. लेकिन हाँ, टुमारो इवनिंग लेट मी नो व्हाट इज द वॉच अलोंग प्री मैच यू वांट. चेल्सी का तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, चेल्सी का प्री मैच. हाँ, नॉर्थ लंडन डर्बी भी मैं सोच रहा करूं, लेकिन आप लोग बताइए व्हाट यू प्रेफर. बट हाँ, रियल मैड्रिड का आई एम जस्ट सीइंग they are playing Shakhtar at home. Okay, so I don't think इतना ज़्यादा pressure है compared to maybe in Inter or Barca. So I think Real Madrid will take it easy against Osasuna at home. लेकिन can they take it easy? No. That's what it is. Leagues are going to be interesting this month क्योंकि इतना सारा football है. There will be teams dropping points, and that's why it will be very kind of close for me and good to watch every match. अरे great. Well, कॉन्फिडेंस की बात थोड़ी कम है, लेकिन लेट्स सी. हालैंड में ओपिनियन स्टे एंड कंटिन्यूज दैट लेगेसी सिटी. ओके, फेयर इनफ. चलो भाई, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर कमिंग ऑन. अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉर पीपल हु माइट हैव मिस्ड आउट. हमने बात किया है लिटरली ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मैच, राइट. कोई मैच को मिस कर रहा है तो बोलो भाई. इफ बेसिकली इफ आई मिस्ड अ पर्टिकुलर मैच, या यू कैन से बोर्नमथ ब्रेंटफोर्ड मैंने मिस कर दिया हो, लीड्स एस्टन विला. बट अगेन लीड्स एस्टन विला काइंड ऑफ सेड ऑलरेडी द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर. बाकी इट्स अप टू द वीकेंड. एंड ऑफ कोर्स आज रात को भी मैच है भाई, बायर्न वाला मैच, तो भूलिएगा मत. लेकिन टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड यस, विल बी बैक विद शॉर्ट्स, विद क्रिकेट कंटेंट ऑन अदर चैनल एज वेल एज यहाँ पर प्री मैच एंड वॉच अलोंग कल. एंड मेंबर्स, याद रखिए, एवरी मेंबर आउट देयर, डू मैसेज मी व्हाट्स योर आईडी सो दैट वी कैन बेसिकली डू अ मेंबर स्ट्रीम. ठीक है, बाय.